Smile is the mirror always. Practice it every day morning. You will start seeing difference in your life. I, Dr. Bhuvnesh Sharma, Assistant Professor, Department of Education, SVSU Meerut, welcome you all on the first day of National Conference on NEP 2020 Transformation of Indian Education System in collaboration with Mahatma Gandhi National Council of Rural Education. In this regard, I first of all welcome Professor Dr. G.K. Thapliyal, Honorable Vice Chancellor, Swami Vivekanand Subharti University, for providing us the permission to conduct today's conference on enriching the knowledge of our students of B.Ed, M.Ed, B.L.Ed in changing scenario of National Conference NEP 2020. I would like to share my heartful gratitude to Professor Dr. Shalya Raj, ma'am, Honorable CEO Swami Vivekanand Subharti University Meerut, that she has always shown her progressive and phenomenal attitude for enhancing the knowledge of all the students and faculty members of any department or college of Swami Vivekanand Subharti University. I welcome you, ma'am, from the core of my heart on behalf of Department of Education, Faculty of Education, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. I would like to share my gratitude to Professor Sandeep Kumar, Dean Faculty of Education, SVSU Meerut, for encouraging us to conduct today's conference. I feel lucky enough to Professor Dr. Anuj Raj, Head Department of Education, SVSU Meerut, for providing me the opportunity to share valuable thoughts of renowned resource persons of central universities on NEP 2020 transformation of Indian education system in collaboration with Mahatma Gandhi National Council of Rural Education. Continuing today's session, I would like to call upon Professor Dr. Sandeep Kumar, Dean Faculty of Education, to deliver some words of motivation to encourage the students with a shower of his blessing and to invite the Honorable Vice Chancellor, sir, for the inaugural of today's National Conference on NEP 2020. Sir, please. A very good morning and Jai Hind to one and all. I, Professor Dr. Sandeep Kumar, Dean Faculty of Education, welcomes you all on the live platform of Swami Vivekanand Subharti University on the occasion of the National Conference on National Education Policy 2020, and the title is the Transformation of Indian Education System. This conference is organized by Faculty of Education for 2 days, that is 8th and 9th April 2020. And we are conducting this conference with the collaboration with Mahatma Gandhi National Council for Child and Recreation, MGNRE. In this conference, we have more than 16 the learned professors, eminent speakers from all over country, from all the zones of the country. And the focus of this conference is to elaborate, to focus all the areas, all the chapters of national education policy, either that is school education, that is higher education, or strengthening the student teachers, or many more topics. In this conference, we have decided the different titles to different eminent speakers, which covered all the national education policy project that is implemented in Uttar Pradesh in 2021 session in the traditional courses. And when we are talking about the teacher education programs, either in education or physical education, we are waiting yet from the National Council of Teacher Education for specific guidelines.
and some another areas like Bar Council of India, Medical Council, and Dental Council, AICT. They also waiting for the response from their apex bodies. This conference will be conducted in two parts, that is online as well as offline, that is hybrid mode, and all the there are few papers also received till now that will be presented in hybrid mode, that is offline and online. I am instructed to invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Major General G.K. Thapliyal, sir. Before that, I would like to introduce our Honorable Vice Chancellor to all the audience. Professor Dr. G.K. Thapliyal is known as the Dr. Gopal Krishnan Thapliyal, has completed his BSc, PDS, MDS, and FIBOS from dentistry. He is the expert from the Faculty of Dental Science, KGMC, Lucknow. Dr. Thapliyal has a long experience and retired as Major General and having more than 40 years of experience in armed forces and higher education. He has been conferred with various prestigious awards such as Sena Medal by the President of India, Commendation Award by GOC, INC, Southern, and Sea Western Commands, Lifetime Achievement Award by the Association of Oral and Maxillofacial Surgeon of India. He has been the head of oral and maxillofacial surgery in ITS Dental College Hospital and Research Center and AFMC Pune and Delhi, along with the heading of maxillofacial team and UN peacekeeping mission hospital in Cambodia. Professor Thapliyal is a visionary, is a good approach, having in the idea of research, idea of national education policy. I welcome you, sir. And similarly, I welcome Professor M.A. Hassan, Professor P.K. Misra, sir, today's guest, and our Vice Chancellor, Dr. Abhay Sankar Godaji, on this platform. Thank you. Sir, I think our Honorable Vice Chancellor is quite busy somewhere, and I would like to request our today's chief guest, Professor P.K. Misra, sir. And before that, I request Dr. Bhuvnesh Sharma, who is hosting the event, to introduce our chief guest to the audience. Thank you. Jai Hind, sir. I am here to introduce a brief about Dr. P.K. Mishra, Professor Dr. P.K. Mishra. We have speakers from most of the states to discuss NEP 2020. First of all, I would like to call upon P.K. Mishra, sir, Director, Center for Policy Research in Higher Education, CPRHE, NIEPA, New Delhi, India. Jai Hind, sir. Before inviting sir for today's talk, let me introduce to his brief achievements of our listener to our listeners. Sir has a wide list of his academic awards, Meshav Scholarship by Israel government in 2018, National Scholarship of Slovak Republic by Slovak government in 2018, and Commonwealth Academic Fellowship by Commonwealth Scholarship Commission on United Kingdom in 2018, and Indo-French Social Scientist Exchange Scholarship by FMSH Paris and UGC India in 2013, and Erasmus Munds
scholarship by European Commission in 2009 and senior research scholarship by DAAD Germany in 2008 and doctoral scholarship by DAAD Germany in 2000 in 1995. Junior research fellowship by UGC Government of India in 1993. Beside it, he has academic visits in Germany, UK, France, Denmark, Netherlands, Sweden, Spain, New Zealand, Vietnam, Malaysia, Slovakia, and Australia, Israel, and Japan. Besides this, he is having academic honors like project leader of joint research project under ICSSR India and NIHSS South Africa joint research program in the field of social sciences in 2021. Coordination from CCS University side for Erasmus Mobility Program on Erasmus KA 107 call on 2020 between the Consultant of Philosopher and University in Nitra, UKF, Slovakia, and CCS University. Coordinator of Integrated B.Ed Curriculum Committee in UP Government and member of TSG 50, 14th International Congress on Mathematical Education in July 11 to 18 in 2021. He is co-chaired on TSG 6th Adult Learning of Mathematics Lifelong Learning 13th International Congress and Mathematical Education in July from July 24 to July 31 in 2016. He has also served as a member of Curriculum Committee on Subject Education of MP, Government Member of Research Advisory Committee and Inter-University Center of Education, IUCTE Varanasi. He has also served as a member of NCTE OER Committee and served the member of NCTE Committee on Internationalization of Teacher Education. He has also served as a member of NCTE Working Group of Curriculum for Existing Teacher Education Program. He has also served as a member of NCTE. Beside this, he has also joined so many professional associations like member of Development of Studies in Education, UK member of International Professional Development Association, UK Life member of Indian Association of Teacher Education, and Indian Life member of All India Association of Teacher Education. Beside this, he is also having academic contributions like publication of research papers in international and national journals, international publishers, chapters in books and international and national publishers, popular communication blogs, and he is also having 31 papers in conference proceeding, 14 presentations in different conferences held in foreign countries, and 28 papers presented in conferences. He also has 9 invited lectures in foreign institutions and also 191 invited lectures in Indian institutions. He also has a research project by international agencies. So there are so many achievements of Professor Dr. Mishra. Before starting his brief, I would like, due to the shortage of time, I would like to introduce Professor P.K. Mishra sir to shower his blessings upon the students and faculty members of Faculty of Education. So please, thank you, sir. नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी सर, आ रही है, आ रही है। मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रही है। बहुत बहुत नमस्कार सबको, सुप्रभात। इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर जी के थपलियाल जी, शिक्षा विभाग शिक्षा संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर संदीप कुमार जी, प्रोफेसर अनुज, अभी जो मंच का संचालन कर रही थी डॉक्टर भुवनेश शर्मा जी, और इस सत्र में बहुत सारे वक्ता हैं, उनमें से मैं कुछ से परिचित हूँ। मेरी मित्र प्रोफेसर सारिका शर्मा जी, सत्र में अन्य जो वक्ता हैं, और साथ ही साथ इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न भागों से जुड़े हुए साथियों, मैं बधाई देता हूँ सुभारती विश्वविद्यालय को कि वो एक सामयिक विषय पे इस संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। और जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इस पे लगातार चर्चाएं हो रही हैं, और चर्चाएं भी हो रही हैं और इस पे उसका क्रियान्वयन भी हो गया है।
तो मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अपने साथ जुड़ने का और अपनी बात रखने का मौका दिया। मित्रों, 20-25 मिनट अपनी बात रखूंगा आपके सामने, और चूंकि सुभारती विश्वविद्यालय इस चर्चा को आयोजित कर रहा है, इस संगोष्ठी को आयोजित कर रहा है, तो मैं अपनी बात उच्च शिक्षा पर केंद्रित रखूंगा। 5-10 मिनट के करीब हम लोग बात करेंगे कि ये शिक्षा नीति कहती क्या है, और 10 से 15 मिनट इस पे चर्चा कि हम विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को, शैक्षिक संस्थानों को क्या करना चाहिए जिससे ये शिक्षा नीति जो कह रही है वो धरातल पे आ सके। तो 20-25 मिनट आपके साथ हूं और आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आभारी हूं। शुरुआत इस बात से करूंगा कि ये देश में आई हुई तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, और तीसरी शिक्षा नीति आप जैसा जानते हैं 2020 में आई। कुछ लोग इसको नई शिक्षा नीति कहते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति इसका नाम नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जो पहले की दो शिक्षा नीतियां थी तो वो थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो पहले जो दो पॉलिसीज आई थी उनको हम एनपीई कहते हैं, और इसको कहते हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब ये देखें कि ये शिक्षा नीति कहती क्या है, उच्च शिक्षा में क्या बात करती है, उच्च शिक्षा में किस तरह के बदलावों की बात करती है। इसका जो अगर मैं देखूं कि उच्च शिक्षा में ध्येय वाक्य क्या है, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा, ये इसका ध्येय वाक्य है, विद्यालय शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में भी। विद्यालय उच्च शिक्षा में किस तरह के परिवर्तनों की बात करती है, तो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं कि जो कुछ मुख्य परिवर्तन है वो क्या कहती है। अभी जैसे आपको मालूम है कि देश में कई तरह के संस्थान हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनिटीज हैं, कई तरह के संस्थान हैं। ये शिक्षा नीति कहती है कि अब आने वाले समय में मूलतः 3 तरह के संस्थान होंगे: शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय, शोध केंद्रित विद्यालय, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। यानी 3 तरह के संस्थानों की बात करती है कि एक वो संस्थान होंगे जहां शोध पे ज्यादा जोर होगा लेकिन वहां शिक्षण भी होगा, दूसरे वो जहां शिक्षण पे ज्यादा जोर होगा लेकिन वहां भी शोध होगा, और तीसरे ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। यानी इस शिक्षा नीति के नजरिए से देखें तो आने वाले समय में देश में मूल रूप से 3 तरह के संस्थान रहने वाले हैं। दूसरा जो बदलाव है जो ये शिक्षा नीति कहती है वो ये कहती है कि अभी आपको पता है कि हमारे देश में 1986 की शिक्षा नीति आने के बाद से 10+2+3 का मॉडल चल रहा है, यानी 12 साल की विद्यालयी शिक्षा और 3 साल का ग्रेजुएशन, जिसको कुछ देशों में अंडर ग्रेजुएशन भी कहा जाता है, हम उसको ग्रेजुएशन कहते हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये शिक्षा नीति कहती है कि अब जो ग्रेजुएशन है हमारा, उसमें विद्यार्थी के सामने 2 विकल्प होंगे। पहला ये कि वो 3 साल पूरा करने के बाद अगर जाना चाहता है तो जा सकता है, उसको ग्रेजुएशन मिल जाएगा, बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर वो चाहे तो 1 साल और उसको जारी रह सकता है और तब उसको ग्रेजुएशन विद रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। यानी उसके सामने 2 विकल्प हैं, 3 साल का बैचलर करे या 4 साल का भी बैचलर कर सकता है, और उस बैचलर को करने के बाद वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकता है, रिसर्च में भी जा सकता है। एक और अच्छी बात ये शिक्षा नीति कहती है कि पहले अगर हम बैचलर के पहले सत्र में या प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लेते थे, तो फिर हम अगर उसको पूरा नहीं करते थे तो उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। या हमने प्रवेश लिया है तो हमें पूरा करना ही है, 3 साल पढ़ना ही है। लेकिन अभी शिक्षा नीति ने विकल्प दिया है कि अगर आप 1 साल पूरा करने के बाद जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, 2 साल के बाद भी जा सकते हैं, 3 के बाद भी जा सकते हैं और 4 के बाद भी जा सकते हैं। यानी अगर 1 साल के बाद मैं जाना चाहूं तो मुझको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल के बाद जाऊंगा तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 के बाद जाऊंगा तो बैचलर की डिग्री मिल जाएगी, और 4थे साल जाऊंगा तो बैचलर विद रिसर्च, ग्रेजुएशन विद रिसर्च मिल जाएगा। तो विकल्प है, एक विकल्प देती है।
एक तो ये बात, तो दो बात हो गई कि जो 3 तरह के मुख्य संस्थान होंगे और विद्यार्थी को विकल्प मिलेंगे, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और बैचलर विद रिसर्च। तीसरी बात, विषयों को लेके भी ये विकल्प देती है। अभी अगर मैं भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो मैं भौतिक विज्ञान ही मूलतः पढ़ता हूं। हमारे देश में सीबीसीएस सिस्टम आया तो हमको कुछ अन्य विषय पढ़ने की भी आजादी मिली, लेकिन इस शिक्षा नीति में ये विकल्प बढ़ा दिए गए हैं और इसमें ये कहा गया है कि अब जो डिग्रीज मिलेंगी वो क्रेडिट के आधार पे होंगी। यानी अगर आपको बैचलर करना है तो इतने क्रेडिट पूरे करने हैं और वो क्रेडिट में आप कोर कोर्सेज से भी क्रेडिट ले सकते हैं और ऑप्शनल कोर्सेज से भी ले सकते हैं। यानी आप अलग अलग विषयों को पढ़ सकते हैं। अगर आप फिजिक्स के विद्यार्थी है और आप हिंदी में भी रुचि रखते हैं और हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो एक विकल्प ये भी देती है और इसीलिए ये शिक्षा नीति एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करती है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि मैं अलग अलग कोर्सेज को पढ़ता रहूंगा और अलग अलग कोर्सेज को पढ़ते हुए क्रेडिट जमा करता रहूंगा और जब मेरे पास जिस डिग्री के लिए जितने क्रेडिट चाहिए, मान लीजिए बैचलर के लिए 80 क्रेडिट चाहिए और 80 क्रेडिट हो जाएंगे तो मैं उनको रिडीम कर सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि आप मुझे डिग्री दे दें। एक और अच्छी बात है कि अभी विद्यार्थी जहां प्रवेश लेता था उसको अपनी पूरी शिक्षा वहीं से पूरी करनी पड़ती थी। अगर किसी ने सुभारती विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया तो वो सुभारती विश्वविद्यालय से ही अपनी शिक्षा पूरी करेगा, लेकिन अभी उसके सामने ये विकल्प है कि सुभारती विश्वविद्यालय में उसने प्रवेश ले लिया तो वहां से भी पढ़े और अन्य विश्वविद्यालयों में भी अपने को इनरोल करे, वहां से भी कुछ पाठ्यक्रम कर सकता है, कुछ कोर्सेज कर सकता है, कुछ क्रेडिट जमा कर सकता है। उसकी नीतियां यूजीसी ने बनाई हैं, आगे भी बना रही है। तो वो अलग अलग, यानी मैं एक विश्वविद्यालय का तो छात्र हुई लेकिन मैं अन्य विश्वविद्यालयों से भी पढ़ सकता हूँ और मेरे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में मेरे क्रेडिट जमा होते जाएंगे कि मैंने किस विश्वविद्यालय से कौन सा कोर्स किया। जब उसको पूरा कर लूंगा उतने क्रेडिट मेरे अकाउंट में आ जाएंगे और उन क्रेडिट को मैं जोड़ करके अपनी डिग्री ले सकता हूँ। यानी मेरे पास विषयों का विकल्प है और मेरे पास संस्थानों का भी विकल्प है। यानी अभी मैं एक बहुत सीमित दायरे में अपनी शिक्षा लेता था, एक सीमित विषय और सीमित संस्थान में, लेकिन अभी मेरे पास विषय भी ज्यादा है और अभी मेरे पास ज्यादा संस्थानों का मैं विद्यार्थी हो सकता हूँ। तो एक ये अच्छी बात कहती है। ये शिक्षा नीति हर संस्थान को प्रेरित करती है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने। सुभारती संस्थान तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, लेकिन बहुत सारे संस्थान हमारे देश में ऐसे भी हैं जो एक विषय विशेष की शिक्षा देते हैं। और ये शिक्षा नीति कहती है कि 2040 तक हर शैक्षिक संस्थान को ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपने को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में बदल ले। और एक और बड़ी अपेक्षा इस शिक्षा नीति की है, अगर आपको पता हो कि इस समय भारत में जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है उच्च शिक्षा में वो 27.3% है और अभी भारत में लगभग 3,85,00,000 विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा में। ये नीति कहती है कि 2035 तक जो GER है वो 50% होना चाहिए, 50% का लक्ष्य है। और निश्चित है कि जब 27% है और हम 3,85,00,000 हैं, लगभग 4 करोड़ के करीब विद्यार्थी हैं, तो जब GER 50% होगा तो आप सब मोटे तौर पर अनुमान लगाएं, यानी 2035 तक ये शिक्षा नीति चाहती है कि देश में लगभग उच्च शिक्षा में लगभग 8 करोड़ विद्यार्थी हों मोटे तौर पे। तो ये चाहती है कि उच्च शिक्षा ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन ज्यादा लोगों तक खाली पहुंचे ही नहीं, उच्च शिक्षा नहीं पहुंचे, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचे जो विद्यार्थी का जीवन भी बेहतर करे और ऐसे विद्यार्थी भी तैयार करे जो समाज का और देश का भी भविष्य बेहतर कर सके। इसीलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन की बात करती है, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, पूर्णता वाली शिक्षा, पूर्णता युक्त शिक्षा, जिसको कहते हैं हेड हैंड एंड हार्ट वाली शिक्षा। यानी जो व्यक्ति निकले, जो व्यक्ति उस शिक्षा को ग्रहण करे
वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपने लिए भी उपयोगी हो और समाज और देश के लिए भी उपयोगी हो। एक और सुझाव ये शिक्षा नीति देती है, वो शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे से, उच्च शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा हुआ है। जैसा आपको मालूम है कि इस समय देश में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, अलग अलग हम पाठ्यक्रम चलाते हैं, अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग तरह की रेगुलेटरी बॉडीज हैं। ये शिक्षा नीति कहती है कि हमें इस ढांचे पे विचार करने की जरूरत है और ये सुझाव देती है कि भारत में एक हायर एजुकेशन कमीशन होगा, उच्च शिक्षा का, है कि हायर एजुकेशन कमीशन, और उस हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर कई 4 वर्टिकल्स होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ओवरऑल होगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके अंदर 4 वर्टिकल होंगे। पहला, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। दूसरा, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC। तीसरा, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और तीसरा, जनरल एजुकेशन काउंसिल। चौथा, जनरल एजुकेशन काउंसिल। 4। अब इसमें कौन करेगा क्या? है कि तो पूरी तरह से HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो पूरी एक संस्था होगी और उस संस्था के 4 वर्टिकल होंगे। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उसमें से मेडिकल और लॉ को छोड़ के बाकी सारी रेगुलेटरी बॉडीज समाहित हो जाएंगी, यानी उनकी शक्तियां समाहित हो जाएंगी NHERC में। जो एक्रीडेशन काउंसिल होगी, वो एक्रीडेशन की भूमिका, यानी संस्थानों का एक्रीडेशन कैसे हो, इसकी भूमिका, इसकी रूपरेखा तय करेगी, इसके बारे में विचार विमर्श करेगी। ग्रांट्स काउंसिल का काम होगा विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को अनुदान देना। और जनरल एजुकेशन काउंसिल जो इस बात की तस्दीक करेगी कि हमें क्या पाठ्यक्रम लाना चाहिए, हमारे लर्निंग आउटकम क्या होने चाहिए, किस तरह से पढ़ने पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, तो इस तरह की बातें तय करेगी। तो अगर आप देखें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की तरफ ले जाना चाहती है। विद्यार्थी को ज्यादा विकल्प मुहैया कराती है, ज्यादा अवसर देती है, और जब हम विद्यार्थी को ज्यादा अवसर देंगे तो संस्थानों से निश्चित रूप से अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है। अब और भी बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे नहीं कह सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें हैं और मैं आप सबसे अनुरोध भी करूंगा, आपने पढ़ी होगी और अगर मान लीजिए नहीं पढ़ी तो आपसे अनुरोध करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें। हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे है, और बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, 60-62 पृष्ठों का है अंग्रेजी में और लगभग 100 पृष्ठों का है हिंदी में। तो इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आप जब उसमें और बहुत सारी चीजें आपकी नजर आएंगी, तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। लेकिन चूंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आ चुकी है और इसमें क्या कहा गया है ये हम लगभग सब जानते हैं। ये बातें मैंने इसलिए की कि मैं जो आगे कहने जा रहा हूं उसको इसके साथ जोड़ सकूं। अब संस्थानों की, उच्च शिक्षा संस्थानों से अपेक्षा क्या है, उन्हें किधर चलना चाहिए, किधर बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, अब हमें उस पर काम करने की जरूरत है। क्या कह रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें पता है, और ये भी हमको मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करना सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी शैक्षिक संस्थानों की भी है, शिक्षकों की भी है, विद्यार्थियों की भी है। तो हम सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है, ये हम सबकी मिली जुली शिक्षा नीति है, हम सबकी शिक्षा नीति है, तो हम इसका क्रियान्वयन भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो क्या करना चाहिए, तो मैं 4-5 सुझाव देता हूं जो इस संस्थान के लिए भी उपयोगी हैं और आप सबके संस्थानों के लिए भी उपयोगी हैं। सबसे पहले तो हमको अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के अंदर जो कोर्सेज हैं उनको विचार करने की जरूरत है, उनको बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि ये शिक्षा नीति कह रही है होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो सबसे पहले आपको अपने पाठ्यक्रमों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में परिवर्धित और संवर्धित करने की जरूरत है, और ये भी देखने की जरूरत है कि मेरा विषय है उसमें मैं अन्य विषयों का कैसे प्रयोग कर सकता हूँ। तो अच्छा होगा कि आप
अपने यहाँ जितने भी आपके पाठ्यक्रम चल रहे हैं उन पे विचार करें और ये सोचें कि इसमें किस तरह का बदलाव लाया जा सकता है और कैसा बदलाव उपयोगी होगा, विद्यार्थियों के लिए क्या फायदेमंद होगा। और क्योंकि अब हर संकाय को कुछ ऐसे कोर्सेज रखने पड़ेंगे जो कोर कोर्सेज होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज भी रखने होंगे जो अन्य संकायों के विद्यार्थी भी पढ़ सके। तो अभी तक हम अपने कोर्सेज ही देते थे, लेकिन अब हमें कुछ ऐसे कोर्सेज भी लेके आने पड़ेंगे जो अन्य विषयों के विद्यार्थी भी जिसमें रुचि रखें और जिसको पढ़ सकें। तो सबसे पहला जो काम होना है और जो विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के स्तर पर किया जाना है वो है पाठ्यक्रमों के बदलाव का। ऐसे पाठ्यक्रम जो विषय के विद्यार्थी के लिए भी उपयोगी हों और ऐसे पाठ्यक्रम जो अन्य विषयों के विद्यार्थी के लिए भी उपयोगी हों। तो आप इसके लिए कार्यवाही कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, एक ये शिक्षा नीति ने, जैसा मैंने कहा कि अब पाठ्यक्रमों को आपको इस तरह से तैयार करना है कि अगर विद्यार्थी 1 साल में उसको छोड़ना चाहता है या 1 साल का ही पूरा करना चाहता है तो उसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और फिर ग्रेजुएशन विद रिसर्च, तो खाली पाठ्यक्रमों को संवर्धित ही नहीं करना, उसको इस तरह से करना है कि 1 साल में हम क्या पढ़ाएंगे, 2 साल में क्या पढ़ाएंगे, 3 साल में क्या पढ़ाएंगे, 4 साल में क्या पढ़ाएंगे, 1 साल में कितना पढ़ा देंगे और क्या चीज होगी जिससे उसको सर्टिफिकेट देंगे। और खाली सर्टिफिकेट देना उद्देश्य नहीं है, वो सर्टिफिकेट क्या उसको कहीं पर काम भी आएगा, वो उस सर्टिफिकेट को लेके वो कहाँ जा सकता है, किस तरह के संस्थान में जाएगा, किस तरह के रोजगार के अवसर उसके लिए उत्पन्न होंगे। तो ये सब विचार करते हुए जो सबसे बड़ा काम है और जिसको करने में समय भी लगता है, तो मेरा अनुरोध ये होगा कि इस दृष्टि से अगर संस्थान देखेंगे तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रमों का परिमार्जन, संशोधन आसान काम नहीं है, उसको करने में समय लगता है। और जब हमारी दृष्टि ये है कि हम ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं जो विद्यार्थी के लिए बहुत तरह से उपयोगी हो और उसको अलग अलग तरह के अवसर प्रदान करता हो। दूसरा जो रोल है, दूसरी जो बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो शिक्षकों की है। तो संस्थानों का ये दायित्व है कि वो शिक्षकों में को इसके लिए तैयार करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षकों से क्या अपेक्षा करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है एनर्जाइज्ड, मोटिवेटेड एंड कैपेबल फैकल्टी। तो आप अपने शिक्षक समूह की बैठक करें, शिक्षक साथियों के साथ बातचीत करें, संवाद करें और ये देखें कि शिक्षकों को भी किस तरह से प्रेरित किया जा सकता है। और क्योंकि पाठ्यक्रम संवर्धन का काम हो या अन्य कोई बात हो या शिक्षण का काम हो, शिक्षकों को ही करना है। तो शिक्षकों की एक टीम बना के, उनका एक समूह बना के अगर हम इस नीति को क्रियान्वित करने की बात करेंगे, उनकी सहायता भी लेनी है और उन्हें इसके लिए तैयार भी करना है। तो अगर शिक्षकों को किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, किसी जानकारी की आवश्यकता है, उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, तो वो भी संस्थान करे। और जब अगर शिक्षक तैयार हो जाएंगे तो फिर इस नीति का क्रियान्वयन आसान है। तो शिक्षकों पर ध्यान देने, उनको भी प्रशिक्षण देना है और उनकी मदद से शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने की तरफ भी चलना है। तो इसके लिए एक स्पष्ट नीति अगर संस्थान बनाएंगे तो बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद ये शिक्षा नीति कहती है कि शोध पर भी हमको ध्यान देना है, लेकिन सिर्फ वो शोध नहीं जो अकादमिक प्रवृत्ति का हो, यानी खाली हम शोध के लिए शोध करें, ऐसे शोध की वकालत नहीं करती है शिक्षा नीति। ये शिक्षा नीति कहती है कि वो शोध जो समाजोपयोगी हो, मैं शोध करूं और शोध की सार्थकता तब है जब वो किसी नीति में, किसी उत्पाद में, किसी व्यवस्था में कोई बदलाव लाए, कोई सुधार के बारे में सुझाव प्रस्तुत करे। तो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी में भी शोध होगा, जो शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय है, संस्थान है, उसमें भी शोध होगा। तो शोध को हम अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, ये कैसे कर सकते हैं? शोध की गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं? समाजोपयोगी शोध कैसे कर सकते हैं? शोध को हम अपनी कक्षा का अभिन्न अंग कैसे बना सकते हैं? शोध को एक संस्कृति के रूप में कैसे विकसित करते हैं? इस पे भी विचार करने की जरूरत है।
तो विश्वविद्यालय और संस्थान अगर इस बात को लेके भी चर्चा करें, परिचर्चा करें, नीतियां बनाएं कि शोध और शिक्षण को कैसे जोड़ें और शोध को विश्वविद्यालय व्यवस्था का, उच्च शिक्षा का अभिन्न अंग कैसे बनाएं, तो इस पे भी अगर प्रयास करेंगे विश्वविद्यालय, इस पे भी स्पष्ट नीतियां बनाएंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। चौथी बात, ये मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करती है, क्योंकि 21वीं सदी में जो हमारी समस्याएं हैं वो जटिल हो रही है और जटिल समस्याओं का समाधान किसी एक विषय से नहीं निकाला जा सकता। जब हम कोरोना की आपदा से जूझ रहे थे तो उसका समाधान जब हमने निकाला तो उसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने योगदान दिया और हर विषय के लोगों से योगदान दिया। तो हम अलग अलग विषयों को मिलाकर ही 21वीं सदी की समस्याओं का सामना कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो इससे हम तभी बच सकते हैं जब हम इससे सामूहिक रूप से विचार करें, सामूहिक रूप से नीतियां बनाएं, अलग अलग विषय के विशेषज्ञ बैठें, चर्चा करें, बात करें, तभी समस्या का हल निकल सकता है। तो हम अपने अध्ययन अध्यापन में मल्टी डिसिप्लिनरिटी को कैसे शामिल करें, कैसे जब मैं एक विषय पढ़ाऊं तो दूसरे विषय का भी उदाहरण लूं, तो मेरी अपेक्षा ये, मेरा सुझाव ये कि हम कोशिश करें, हमारे यहाँ जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है, एक विषय को उसी विषय के लोग पढ़ाते हैं, हम कोशिश करें कि जब हम किसी कोर्स को पढ़ाएं तो उसमें एक मेरे संकाय का शिक्षक हो, एक किसी दूसरे संकाय का शिक्षक हो और वो 2-3 लोगों का समूह मिलके अगर विषयों को एक किसी कोर्स को पढ़ाएगा तो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरिटी आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा उसमें संभावनाएं होंगी। तो हम अपने पढ़ने पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका सुधारें, थोड़ा सा तरीके में बदलाव करें कि हम अकेले या अपने विषय का शिक्षण हम ही करेंगे, इसकी जगह हमारे विषय में अन्य साथी भी कैसे सहयोग दे सकते हैं, अन्य विषय के साथी भी कैसे आ सकते हैं, ऐसी योजना बनाएं, ऐसी नीतियां बनाएं और इसको करें तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो मित्रों, बहुत सारी संभावनाएं हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे और जब से शिक्षा नीति आई है, सरकार भी अपने स्तर पे कर रही है, यूजीसी बहुत सारे रेगुलेशंस ला चुकी है, बहुत सारे रेगुलेशन आ रहे हैं, लेकिन रेगुलेशन लाना उन संस्थानों का काम है, वो लाएंगे, लेकिन इसका क्रियान्वयन धरातल के स्तर पर तो शैक्षिक संस्थानों को ही करना है और हमको 2-3 काम करने। हमारे पाठ्यक्रम तो चल ही रहे हैं, थोड़ा सा उन पाठ्यक्रमों का ढांचा बदलना है, उनका पाठ्यक्रम बदलना है, पढ़ने पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका बदलना है। यही 2-3 काम मुख्य हैं और ये काम कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं करेगी, ये काम संस्थानों को ही करने हैं और इसलिए करने हैं कि ये शिक्षा नीति शैक्षिक संस्थानों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, शिक्षकों के लिए है। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में, इस संगोष्ठी में बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे सुझाव आएंगे। विश्वविद्यालय उन सारे सुझावों को, विचारों को एकत्रित करे और उनको लेके एक एक्शन प्लान तैयार करे और उस एक्शन प्लान के आधार पे अपने यहाँ पाठ्यक्रम, शिक्षण और शिक्षण अधिगम के तौर तरीके, शोध, इनको आगे बढ़ाए, इनको परिवर्तित करे। तो मुझे लगेगा कि इस संगोष्ठी की सार्थकता है और ये संगोष्ठी उपयोगी है और आप ये 2-3 काम कर लेंगे तो आपने ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको क्रियान्वित कर दिया। इसमें 2 ही 3 बातें हैं जो हम शैक्षिक संस्थानों को करनी है, बाकी काम तो रेगुलेटरी बॉडीज कर रही है। जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रेगुलेटरी बॉडीज बनाएंगी, उसमें कैसे विद्यार्थी एनरोल होगा, कैसे उसके क्रेडिट जुड़ेंगे, ये काम वो बताएंगे। लेकिन आपके पास ऐसे कोर्सेज होने चाहिए जिसको बच्चे आप कर सकें और अलग अलग विषयों के विद्यार्थी ले सकें और फिर उनके क्रेडिट ट्रांसफर होंगे। ये नीति रेगुलेटरी बॉडीज बनाएंगी कि एक संस्थान का विद्यार्थी दूसरे संस्थान में कैसे प्रवेश ले सकता है। आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि जब दूसरे संस्थान का विद्यार्थी आपके पास आए तो आप उसको जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप प्रवेश दें और उसको अध्यापन करने, उसको पढ़ने में मदद करें। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सुझाव आपके पास आने वाले हैं। आपने बहुत अच्छे विषय पे इस संगोष्ठी का आयोजन किया, मैं आपको बधाई भी देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जितने सारे सुझाव आएंगे उसमें से आप चुनिंदा सुझावों को लेते हुए एक योजना बनाएंगे और फिर उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे।
आपने मुझे यहाँ आने और अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। Thank you, sir. Thank you so very much that you have uh, huh, that you have given your brief just like Gagar mein Sagar. ये स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ NEP 2020। क्या इसको शुरुआत करने की ज़रूरत है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या इसमें बॉडीज़ हैं, कैसे कैसे हमको काम करना चाहिए, कैसे कैसे टीचर्स के रोल इम्पॉर्टेंट है जो कि हम बच्चों से डील करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आपने दिया कि टीचर्स को अगर किसी भी चीज़ के लिए इंसेंटिव चाहिए या मोटिवेशन चाहिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि इंस्टीट्यूशंस को अपनी कार्यप्रणाली इस तरह की बनानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस NEP का लाभ उठा पाएँ। तो आपने सर इसके ओरिजिन पर NEP के ओरिजिन पर ध्यान दिया कि क्या है ये NEP पॉलिसी और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। दूसरा आपने ये भी बताया कि पहले ये 10+2+3 सिस्टम चलता था और उसके बाद NEP में जो चेंजेस हुए हैं उस पर भी आपने प्रकाश डाला। मैं समझती हूँ कि सभी जो विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं बहुत बहुत लाभान्वित हुए होंगे आपकी प्रिय वचनों से, मेरे को कहना चाहिए। और इसके बाद आपने इसका NHERCE, NHC और ग्रांट काउंसिल और जनरल एजुकेशन काउंसिल, इन चारों जो अथॉरिटीज़ हैं इन पर प्रकाश डाला और उसके साथ ही साथ प्रकाश डाला कि इन सारी बॉडीज की शक्तियों को अगर हम समाहित करें तो एक NEP का नया आइडिया डेवलप हुआ जिसको हमसे क्या अपेक्षा है इस पर प्रकाश डाला और इसको परिवर्तित और संवर्धित करने की जरूरत है इस पर भी प्रकाश डाला। और साथ ही साथ यह भी बताया कि इंस्टीट्यूशंस को कुछ ऐसे विषय भी लाने होंगे जो पाठ्यक्रमों में बदलाव को लाएं। जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया कि फिजिक्स का स्टूडेंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी या सिविक्स या कुछ भी पढ़ सकता है, तो ये सुविधा पहले नहीं थी। जो साइंस स्टूडेंट है वो साइंस स्टूडेंट ही था, जो आर्ट स्टूडेंट है वो आर्ट स्टूडेंट ही था। सो दिस इज अ वेरी मच गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स दैट दे कैन टेक देयर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, दे कैन डू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड दे कैन ऑल्सो प्रिफर रिसर्च इन देयर एजुकेशन। आपने शोध को भी समाहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि वर्तमान जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं वो अपने अपने विषयों में, अपने इच्छित विषयों में, बल्कि मेरे को कहना चाहिए अपने इच्छित विषयों में शोध कर सकें, शोध को अपनी पढ़ाई का हिस्सा बनाएं। तो इस बदलाव की जो जरूरत है ये वर्तमान समय की एक महती आवश्यकता है, इस पर आपने बहुत बहुत प्रकाश डाला। Thank you, sir. Thank you so very much. You have explained very much broad concept in a short while, in a short moment of time. So thank you so very much. And Jai Hind. सबको आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर। Thank you, sir. Thank you. Now it's time for NEP 2020 program to move forward for Professor M.A. Hassan. Professor M.A. Hassan is Head, Department of Physiology, Center of Excellence, Ministry of Youth and Affairs, Annamalai University, Tamil Nadu, India. Sir is the second eminent speaker of the National Conference. Let me first introduce our viewers the brief about Sir. Sir has 8 publications in national journals, 17 international journals, 1 national conference. So the coming to the list of internationals. International study is effect of low and moderate intensity a circuit training on physical components among college of male and football players. International Journal of Psychology, Physiology and Education, Volume 3. Now the second is effect of polyometric training with and without weighted vest on physical variables among college men volleyball players and International Journal of Physiology and Education, Volume 3. The third is comparison of height and weight among all India inter-university male handball players.
that was published in International Journal of Current Research. The fourth one is comparison of agility among headball players of different playing that was published in International Journal of Current Research. The fifth is analysis of coordinative among different ball game players of Annamalai University. The sixth is effect of yoga practice on physiological fitness parameters of male physical education students. Now, coming on to the list of national publishment, the study is effect of moderate intensity circuit training on skill performance variable among college male and female football players. The second is effect of polyometric training with and without based on explosive strength among college men and volleyball players. The third one is analysis of mental health of self-concept in relation to academic achievement of coastal area of schoolboys. The next is impact of pranayama on resting heart rate among female of different age groups. The next is investigation of introversion and extroversion among male and female hockey players. And the next is analysis of selected physical fitness variable of cricket players involved in bowling and wicket keeping. Now, the selected physiological and physical characteristics of cricket players involved in batting and wicket keeping. So, this was the brief about M.A. Hassan sir. Her topic is NEP 2020 Transformation of Indian Education System. Sir M.A. Hassan is here before you. So, please give your blessing to our viewers and listeners. Sir M.A. Hassan, please. Jain sir. Hello. Hello, Jain sir. Again. Namaskar. Namaskar. Good morning. Good Am I morning. audible? Yes, sir. सुन रहे Yes, क्या? sir. Yes, मैं sir. जरा- सुन रहे, ठीक. सुन रहे, sir. Okay, sir. Thank Start कर दूं? Very good morning to one and all, especially my heartfelt thanks and gratitude to Professor Dr. G.K. Taplial, Vice Chancellor of Swami Subhardi University, Meerut, and Professor Dr. Sandeep Kumar, Dean Faculty of Education, Swami Subhardi University, Meerut, and my previous speaker and Professor Dr. Pradeep Kumar Mishra, Director, Center of Policy Research in Higher Education. And the key star of this workshop seminar organization, Secretary Dr. Bhunesh Sharma. It's my heartfelt thanks to everyone, one and all, to welcome me in this mega event that is being conducted in Swardi University. So, my topic was given multidisciplinary approach for physical education and sports sciences, a special reference to National Education Policy 2020. I just gone through it and let you know, education system has evolved to a great extent only for better teaching learning process. And the profession of physical education has transformed from the state of a drill master to a physical education teacher, a jack of all trades to a physical director or a professor. Physical education and sports performance were only one of the means of transforming individuals and societies to meet challenges as it contributes largely to physical and mental health.
Cooperation between public and private sectors in the field of sporting events seems outperforms the conventional strategies by better marketing principles adopted in the exhibiting and popularizing the sports, although there are some limitations to be taken care of. Most valued part of the physical education is its curriculum that emphasizes social development. Since 2014, UGC notification on the implementation of CBCS pattern templates for each of the undergraduate disciplines were published. One of it is for BPES, while NCTE formulated BPEd and MPEd curriculum for purpose of having a uniform curriculum throughout the nation. But nearly after a decade from such notifications, some of the higher education institutions are yet to be adhered to and completely with it. As formative stage, Ministry of Education made a lot of efforts to seek advice to various agencies and educational authorities to make the policy document capable of modernizing our educational system compatible to the international standards and norms, and yet presenting cultural, social, and ethical values. I confirmly believe that policy is formed and declared accordingly. A national webinar on the NEP 2020 was organized by the National Association of Physical Education and Sports, NAPES, from 15 to 18 September 2020 to find out the place and scope of physical education and sports in NEP, National Education College. There, the eminent personalities working in the professions who have participated in the event. The study of NEP was conducted by these experts, keeping in view the theme of the webinar under the following 4 levels of education. One is pre-primary and primary education level, middle, high, and higher secondary level of school education level, higher education, college and university level, and teacher education level. As a stakeholders of some of the professional places suggestions on the recognized physical education and sports sciences equally important as that of other arts and science majors for the society. It requires initiating some measures to rejuvenate physical education system in school education and higher education. Enormous advantages by establishing MPES and MSc Sports Sciences are improving the quality of regulation of improving the quality of regulation on par with other subjects, designing physical education curriculum similar to BPEd, comprising perspectives in education, physical education curriculum as pedagogy subject and engagement with the field will enhance the quality in teacher education. Avoiding pooling of everyone into BPEd will provide opportunity for BSc physical education qualified students to continue higher education in master degree as a fundamental right provided to other subjects. In arts and science subjects, the students are not forced to undergo BEd, which means for teacher education. But in physical education alone, the students were forced to study BPEd after completing BSc physical education. Will provide a liberty to choose profession based on their expertise and legislative interest. Europe's double standards maintained for general teacher education and physical education teachers. Revitalize the physical education, sports, and yogic science as a profession of single entity. The proposed
physical education, sports, yogic sciences may elevate research to world standards. To improve health of every citizen, have to pave way for compulsory physical education in schools and the previous and the provisions for students to appear for secondary and higher secondary school board exams and score marks in physical education as a subjects of separate entity. Can implement fitness and yoga as compulsory elective subjects part 4 in college curriculum. Imparting physical education, sports and yoga at grassroots level will be beneficial to specialize in competitive sports during the higher education and may result in achieving medals in Olympics and other international competitions. It may provide solutions to many unanswered long-term problems, such as treating school physical education teachers as special teachers, along with music, drawing, and sewing teachers. Engaging adolescent children in physical education, sports, and yogic practices will build character and avoid antisocial activities. University of Edinburgh, Scotland, United Kingdom considered the physical education programs, physical education and sports as a potential program in higher education, and also noticed that many other universities across the world were offering master's degree in physical education and sports sciences. The UGC approved to university departments and affiliated colleges for offering MSc physical education or MPS physical education and sports sciences would facilitate an entity to PG programs for the BSc health and physical education qualified students, and therefore thereafter appear for national eligibility test, that is NET, or similar exams accredited by it. Next, I would like to enlighten towards the interdisciplinary approach of various subjects, various disciplines on the sports and physical education program. Miles et al. 1997 defines an interdisciplinary approach as more than one area of sports and exercise science working together in an integrated and coordinated manner to solve a problem. Interdisciplinary research needs to involve a strong integration of information from more than one sub-discipline of sports and exercise science from a outset of particular research program. That's why Gibbs et al. 1994 and Williams and James in 2001 developed a model to demonstrate interdisciplinary approaches where the goal of the sports or exercise is affected by each area involved. Multidisciplinary research involves less integration of the subject disciplines of sports and exercise sciences. Each discipline tends to work a parallel on a common topic. Just like interdisciplinary, it involves more than one sport working together, but different being they work together in an isolated, unitary, and coordinated manner. In multidisciplinary approach, each discipline will look for problems to a solution from within only that discipline. For example, a physiologist will look at how a body responds to exercise. Each discipline will then assemble their findings alternatively in an interdisciplinary approach. The physiologist may work together with biomechanist to look at if rate of fatigue changes with different techniques. The deficient in the integration of sub-disciplines from the outset of sports
and exercise science may be resultant to the multidisciplinary research, thus making it harder to integrate them together whilst trying to bring about an interdisciplinary approach to problem solving. Fragmentation of sports science from physical education had paved a way for inculcating through knowledge and deeper insight on this application of various academic disciplines like sports biomechanics, exercise physiology, sports physiotherapy, sports psychology, sports training, sports nutrition, and sports medicine. The application of scientific principles are studied by examining three branches of science, that is biomechanics, physiology, and psychology. Although this knowledge is applied differently to each of these sports and exercise disciplines. Sports science largely offers expert scientific backup for top sports training and performance, while exercise science has a central role in physical programs aimed at improving general health. The qualified sports and exercise scientists can expect to have a broad technical, physiological, and psychological knowledge, and stands to benefit from current developments within the field, offering a professional status. Chronicles. So way back in 1966, it was started BPE and MPE in India. And in 1990s, BPED and MPED. In 2015, we, the stakeholders in the field of physical education, expected the physical education program should be treated on par with other pedagogical disciplines instead of treating it as a special education program. Hence, the 2016 BPES and MPES introduced in the UGC specified degrees. By 2018, MIAS, Ministry of Youth Affairs and Sports, initiated proposal to establish sports science faculty in the various universities across the country to offer specialized sports science programs like biomechanics, exercise physiology, sports physiotherapy, sports psychology, sports nutrition, sports biochemistry, sports training, anthropometry, and sports medicine, so as to include sports scientific knowledge of various disciplines of study among our own countrymen for a purpose of utilizing their service instead of foreign coaches, trainers, and other supporting staffs. In this modern era, most of the transformation depends upon our innovative ideas in using technology. Transformation starts with each one of us, because only if we contribute for its flourishment, there is a possibility for transformation. Thank you very much. Thank you, sir. आगे शुरू होने वाला है, बस सर बुला रहे हैं, इसी सर को बुला रहे हैं। Thank you, sir, for accepting invitation. मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं क्या फिर भी सर से एक बार मिल लेता हूँ बीच बीच में। बोलो भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, सब ठीक है, बढ़िया जी। मैं करता हूँ बात। बहुत बहुत थैंक यू सर। एंड नाउ वी आर इनवाइटिंग द ऑनरेबल वाइस चांसलर। जैन सर। Hello. Jai Hind to one and all once again. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sorry. Yeah. So shall I start? Yes, sir. You're welcome. Hello. Sir. Right.
Just a minute. I'll just some file got dismissed. Yes, Dr. Sandeep. Yes, sir. Is it okay or now? Am I audible? Sir, all okay? You are audible, sir. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I'm at the outset. I apologize for coming late to this session due to some pressing reasons. I was busy with one of the continuing medical education program was being held at our medical college, and then we have another CME in College of Nursing, and I'm sorry for that. So my greetings to you all on behalf of Swami Vivekanand Subharati University, to all learned speakers and all participants. This is a great honor for me to say a few words to this learned audience and learned speaker. I will not take much time because I have just interrupted your continuing session. So I'll take just few minutes to say a few words about national education policy. I have gone through the national education policy, and I have attended many conferences about the national education policies. The contents are very good. Everything is okay. The purpose is okay. Objectives are okay. But there are some problems related to implementations. There are challenges for implementations. And there are issues related to various disciplines of education. Particularly, it doesn't cover the field of medicines, medical education. It doesn't cover much about the field of nursing education. It doesn't cover the field of law, and it doesn't cover much about that AICT governed educations. So those areas we need to really debate a lot, and we need to find out what are the challenges and how to cope up with those challenges. Ultimately, we will have to implement the policy when by 2030, every institutions, whatever been advised or whatever been recommended, we have to adopt this policy. This is the forward-thinking policy, and definitely, if implemented in words and spirit, this policy is going to take our education sector in a big way. It's going to make our education sector equitable to the global education sector. It is going to definitely take us towards our aim that to become a Vishwa Guru, to become a knowledge guru, knowledge leader in the world. But initially, there are teething problems, and these teething problems have to be ironed out, and will have to be ironed out only when the learned people like our present faculty members or present speakers debate on these issues and come out. There is churning process and come out how to be implemented, what the best way to be implemented, how we can get the desired result or desired outcome of this education policy. That we should be doing it. And ultimately, the goal of the education policy is to produce a complete human being. That human being should not be only employable, but that human being should be an asset to the society. That kind of education we are aiming at. So I'm sure this debate will dwell upon those areas, those points, and ultimately the student level also will be benefited, and they will also critically analyze and think how the best use of this new education policy can be utilized. With those words, I thank you once again, because I don't think there is a much time for me to speak. Already the speakers have already started their speech, and I don't want to come in between. Thank you very much, and I wish you all the best and great luck to you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. You have showered your blessings on all the learners. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much. And I would also like to thank the organizing team for conducting this workshop or conducting this seminars at the national level. Thank you very much. And once again, I thank all the
अभी हैं तो बोलेंगे। Sir, the best thing you have shared with us is the student benefit. Yes, definitely it is. NEP 2020 is in the benefit of students. The problem is how we have to implement this in our university, in our institutions. So it is the time to think well upon NEP 2020. And thank you, sir. Thank you so very much. And now it's the time to Dr. Shatrughan Bhardwaj. Dr. Shatrughan Bhardwaj is State Program Coordinator, Senior Faculty Member in MGNCRE Department of Higher Education, Ministry of Education, New Delhi. Dr. Shatrughan has done a doctorate in Nonviolence and Peace Education and LLB Rajasthan and MA MPhil in Political Science from Central University of Haryana, India. He has been working as a senior faculty in MGNCRE, Department of Higher Education MHRD, Government of India, and before joining, he served as an assistant professor in PG College and resource person in Haryana Institute of Rural Development and visiting faculty in various universities. He is a recipient of many national awards and laurels, and here is the summary of his works. He has served as Gram Panchayat Raj system in and participatory learning technique in extension education. He is also have SBM rural ODF sanitation and hygiene management programs in villages may modify the topic in the line with the theme. This, he has also, the Panchayati Raj institutions are playing meaningful role in the rural development programs, and there is no doubt that Article 40 and 243P and 243 ZZ and 73rd Amendment Panchayati Raj Act 1994 and various policies and schemes are based on philosophy of welfare of villages. The rural development in India is one of the most important factor for growth of the Indian economy. The Ministry of Rural Development in India is an apex body to develop the rural sector, implementing several developmental programs and projects. It needs the data related to rural areas at village level. So, the topic of Dr. Bhardwaj, sir, is NEP 2020 transformation of Indian education system and introduction of MG and CRE. So please. Hello, sir. Hello, Jain, sir. Dr. Bhardwaj, sir. Jain, sir. Jain, namaskar, madam ji. Jain. Definitely, I also welcome all of you on the behalf of MGNCRE Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India. Definitely, हमारे जो you know very well, जो हमारी fundamental duties है, direct principle of state policies हैं, that is very important. मैडम ने जो indicate किया, that is very important part of the you can say that is very important article of our constitution, that is 40, that is related to the Panchayati Raj institutions, PRI. You know very well, 8% you can see कि हमारे देश में even though in the contemporary scenario almost 65% population reside in the villages. So it is very difficult without development of the villages, the development of the country. So there are various national level institutions, state level institutions, apex bodies are working in this field. Our MGNCRE is also an important council of the Ministry of Education, and it is working throughout the country. Particularly, we can say through the higher education institutions,
for the rural development. You know very well now, just before a few minutes, Vice Chancellor was discussing about the national education policy. Dear friends, you know very well, this education policy is dedicated, that is, it is based on the, you can say, experiential learning. You can say it is based on the vocational education. Let first of all, let we discuss some important aspect of the national education policy 2020. After it, we will be discuss about the various issues. Dear friends, you know very well कि learning is and as experiential. जो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, this is the same written in the National Education Policy 2020. In all stages, experiential learning must be adopted, including arts integrated and sports integrated education, storytelling based pedagogy, among others, as standard pedagogy within each subject, with explorations of relations among different subjects. When we talk about the language learning is experiential. You know very well कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बातचीत किया गया है कि हम मदर टंग को मीडियम हमारा रहेगा, बट उसके साथ साथ ही बताया गया कि ऑल लैंग्वेज लर्निंग विल एम टू बी एक्सपीरियंशियल एंड इनहांस थ्रू आर्ट सच एज म्यूजिक, पोइट्री एंड थिएटर. वो सभी लैंग्वेज को एक एक्सपीरियंशियल वे में उनको सीखा जाएगा. वो केवल रेटाफिकेशन वाला और केवल वो बोरिंग वाले मेथड वाला उसमें इग्नोर किया गया है. You know very well, section 4.23 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो फिलोसफी है, दैट इज, यू कैन रीड सेक्शन 4.23. while students must have a large amount of flexibility in choosing their individual curricula, certain subjects and skills should be learned by all students to become good, successful, innovative, adaptable, and productive human beings in today's rapidly changing world. This is the philosophy of the national education policy. और इसी में आगे बड़ा बहुत अच्छे वर्ड्स है, देखिए. इन एडिशन टू प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, these skills include scientific temper and evidence-based thinking, creativity and innovativeness, sense of aesthetics and art, oral and written communication, health and nutrition, physical education, wellness, fitness and sports, collaboration and teamwork, problem solving and logical reasoning, vocational exposure and value, such as, you can say, such as patriotism, sacrifice, non-violence, truth, honesty, peace, righteous conduct, forgiveness, tolerance, mercy, sympathy, helpfulness, cleanliness, courtesy, integrity, pluralism, responsibility, citizenship, skill and values, knowledge of India, including Indian knowledge system, environmental awareness, water and resource conservation, current affairs, and knowledge of critical issues, local communities, state, the countries and the world. ये जो मैंने आपके सामने बोला है, ये ऐसा का ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सेक्शन 4.23 में लिखा गया है. इसमें कोई भी ये, इसमें जो फिलोसफी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बातचीत करते हैं, यू कैन सी कि इसमें वो सभी एस्पेक्ट, वो सभी वैल्यूज उनमें डाल दिया. जैसे कि अभी वाइस चांसलर साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ वैल्यू एजुकेशन की बात की गई है, सेल्फ रिलायंस की बात की गई है,
और नेशनल वैल्यूज की बात की है, तो डेफिनेटली ये सारा का सारा सेक्शन 4.23 में हम बड़े आसानी से इन चीजों को रियलाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। It is recognized that mathematics and mathematical thinking will be very important for India's future and India's leadership role in the numerous upcoming fields and professions that will involve artificial intelligence, machine learning and data science. ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी एस्पेक्ट पे बड़ा जोर दिया गया है साथियों। इसके बाद आप देखोगे कि ग्रेड 6 to 8, 6, 7, 8 कंपल्सरी लर्निंग, कंपल्सरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है। उसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 4.25 that is very important in the context of experiential learning. Section 4.25 में you can see, you can read, every student will take a 1 year long course during grade 6, 7, 8 that gives a survey and hands-on experience of sampling of important vocational crafts such as carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery making, etc. as decided by the state and local communities and as mapped by local skilling needs. साथियों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे पूरे देश में स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क टीम बनी है जो SCRT के माध्यम से हर स्टेट में इन सभी जो लोकल कम्युनिटीज है, जो लोकल इश्यूज है, जो लोकल प्रोडक्शन है, उन चीज सभी पे वो बड़ा फोकस किया जा रहा है। जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 4.25 में बताया गया है, वास्तविक अर्थों में जो भी स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क बने हुए हैं तो उन सब में इन चीजों को इनकलकेट किया जा रहा है। दैट इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। इसके बाद यू कैन सी लोकल एमिनिएंट पर्संस एंड एक्सपर्ट की बात की गई है। अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया में 2-4 दिन से यूजीसी का एक ड्राफ्ट आया है। यूजीसी के ड्राफ्ट के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में जो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसमें विदाउट पीएचडी, विदाउट नेट के टीचर्स की बात की गई है। वो अब लोग की संदर्भ में समझते हैं, लेकिन उसके मूल में बड़ी गहरी बात है, बड़ा इंटेंसिव इंटेंशन है उसका, एक बहुत बड़ी फिलोसफी है। वो क्या है साथियों? यू कैन रीड इन सेक्शन 5.6 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें लिखा है टू प्रमोट लोकल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज schools, school complex will be encouraged and indeed will be supported with suitable resource to hire local eminent persons or expert as specialized instructors in various subjects such as in traditional local arts, vocational crafts, entrepreneurship, agriculture or any other subject where local expertise exists and would benefit students and help preserve and promote local knowledge. इसमें बड़ी गहराई से बताया गया है कि मान लीजिए आज कोई विद्यार्थी पीएचडी कर लेता है, आज कोई स्कॉलर पीएचडी प्राप्त करता है, लेकिन उसमें वो स्किल नहीं है। उसके कंपैरिजन में जिन लोगों को इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों को एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है, वो अपने फील्ड में पिछले 25-30 सालों से कार्य कर रहे हैं, तो एक डिग्री में हम जो पढ़ के आएंगे उससे बेहतर वो आदमी हमें उस चीज के बारे में बता पाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग है और उसने उस चीज को जिया है, उसने उसको वास्तव में उसको किया है, और एक सिर्फ पढ़ करके आए तो उसमें डिफरेंस है। सो दैट इज व्हाई द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस ऑन, इस चीज पे फोकस कर रहा है कि लोकल एमिनिएंट पर्सन एंड एक्सपर्ट है, दैट शुड बी, दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके साथ ही
सेक्शन 5.25 पे हम बात करते हैं स्पेशल लोकल इंस्ट्रक्टर्स फॉर टीचर एजुकेशन. स्पेशल लोकल इंस्ट्रक्टर्स फॉर टीचर एजुकेशन. You can see section 5.25. 5.25 पे it is clear कि special shorter local teacher education program will also be available at BITE, DITES or at school complex themselves, so that eminent local person can be hired to teach at school or school complex as specialized instructors for the purpose of promoting local knowledge and skills. एग्जाम्पल के रूप में यू कैन सी लोकल आर्ट, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, बिजनेस, स्पोर्ट्स, carpentry and other vocational crafts. This program will be suitable supported by the central and state governments. तो इन चीजों पे बड़ा फोकस किया गया है. इसी प्रकार से यू कैन सी अभी आप हायर एजुकेशन में आप लोगों ने जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था कि विदाउट नेट पीएचडी वाले टीचर्स को हायर एजुकेशन में लाया जाए. तो देखिए उसके बारे में बड़ा अच्छा लिखा है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में. इंगेजमेंट विद वर्क एज सिटीजन्स. एक क्वालिटी हायर एजुकेशन must enable personal accomplishment and enlightenment, constructive public engagement and productive contribution to society. It must prepare students for more meaningful and satisfying lives and work roles and enable economic independence. Quality university and college education must therefore aim to be both a joy and an opportunity to which all citizens must have access if they so desire. इस चीज के बारे में बड़ा फोकस किया गया है. साथियों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे दूसरी संस्थान है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट पे काफी फोकस किया गया है. ये आप सेक्शन 10.5 में आप यू कैन सी सेक्शन 10.5 पे बड़े विस्तार से इसके बारे में बताया गया है कि इन एडिशन टू टीचिंग एंड रिसर्च हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विल आल्सो हैव other crucial responsibilities which they will discharge through appropriate resourcing and structure. These include supporting other higher education institutions in their development, community engagement and service, contribution to various fields of practice, faculty development for the higher education system and support to school education. इसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट का जो एस्पेक्ट है वो हायर एजुकेशन को बहुत अच्छे से फोकस किया गया, एड्रेस किया गया है. आर्ट एज एक्सपीरियंस एंड लर्निंग के बारे में भी इसमें बड़ा विस्तार से दिया गया है. तो यू कैन सी कि इसमें आप देखोगे इसमें आप इसमें बड़ा विस्तार से आप देख सकते हैं कि सेक्शन 11.1 में बड़ा स्पष्ट है साथियों. इंडिया हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ होलिस्टिक एंड multi-disciplinary learning in the liberal arts from university such as Takshila and Nalanda. ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ साथियों, इट इज सेम इन द सेक्शन 11.1 में बड़े विस्तार से इसमें लिखा. एक सेकंड, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पहले तक्षशिला, नालंदा जो यूनिवर्सिटी जो होती है उनके बारे में बताया गया. टू द एक्सटेंसिव लिटरेचर्स ऑफ इंडिया कंबाइनिंग सब्जेक्ट अक्रॉस फील्ड.
ancient Indian literary works like Ban Bhatt's Kadambari described a good education as knowledge of the 64th class, 64 कलाओं की बात की गई है, और आर्ट्स. And among these 64th arts were include subject such as singing and painting, but also more scientific field such as chemistry and maths. उनके बारे में भी इसमें बड़े विस्तार से बताया गया है. मल्टीडिसिप्लिनरी एंड क्रेडिटेड कम्युनिटी इंगेजमेंट बेस्ड कोर्स की इसमें बात की गई है. और यू नो वेरी वेल कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हमारे यहाँ है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, और कम्युनिटी इंगेजमेंट पे अभी सभी जो यूजीसी का एक सर्कुलर आया, यू नो वेरी वेल कि उसमें मिनिमम 2 क्रेडिट कम्युनिटी इंगेजमेंट के सभी प्रकार के डिग्री कोर्सेज में इनकलकेट किया जाने का उसमें प्रोविजन है, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ने अक्रॉस द कंट्री ऐसा कर भी दिया है, यू नो वेरी वेल. तो अब इसमें बात कर देखिए सेक्शन 11.7 की जो हम बात करते हैं, सेक्शन 11.7 में बड़ा स्पष्ट लिखा है साथियों कि डिपार्टमेंट इन लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी, आइडियोलॉजी, आर्ट, डांस, थिएटर, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंसेज, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स and other such subject needed for a multidisciplinary stimulating Indian education and environment will be established and strengthened at higher education institutions across the country. The flexible and innovative curriculum shall emphasize on offering credit-based course and project in the areas of community engagement. इस पे इन सभी एस्पेक्ट पे बड़े विस्तार से इस पे फोकस डाला गया है. उसके बाद आप देखेंगे कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड सेवा की बात की गई है. हमारी सेवा value-based education should include developing humanistic, ethical, moral, and universal human values of truth, satya, peace, shanti, non-violence, ahimsa, righteous conduct, dharma, and love, prem, citizenship values, and also life skills in personality development, teaching, learning, and governance. Lessons in seva, seva means service, and participation in community service program will also be considered an integral part of holistic arts education. This is also important part of the National Education Policy 2020. उसके बाद साथियों आप देखोगे कि इंटर्नशिप इन हायर एजुकेशन अभी यू नो वेरी वेल कि 4 मार्च को हमारे देश के माननीय एजुकेशन मिनिस्टर ने इंटर्नशिप के बारे में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, और हमारी AICTE के पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन होगा, और हमारी MGNCRE अभी कम्युनिटी इंगेजमेंट में कई जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इन बच्चों को प्रत्येक स्टेट में इंटर्नशिप का हम प्रोग्राम बड़े लार्ज स्केल पे पूरे देश पे प्रारंभ करने वाले हैं बहुत शीघ्र. अभी उन सभी का रजिस्ट्रेशन बच्चों का, जो बच्चे ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनका भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये हम सब के लिए मैंडेटरी है
कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें बड़े विस्तार से इस विषय पे फोकस डाला गया है कि स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड with opportunities for internship with local industry, business, artists, craft persons, villages and local communities, etc. As well as research internship with faculty and researchers at their own or other higher education institutions or research institutions, so that students may actively engage with the practical side of their learning and as by product further improve their employability. तो इंटर्नशिप इन हायर एजुकेशन पे बड़ा फोकस किया गया है। साथियों, you know very well, national education policy also talks about the urgency of vocational education. इसमें हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो सेक्शन 16 है, सेक्शन 16, 1, 2, 3, 4 इन सभी विषयों पे बड़ा फोकस करता है। यू कैन सी कि सेक्शन 16.1 में लिखा है द 12th 5-year प्लान जो 2012 से 2017 तक था, estimated that only a very small percentage of the Indian workforce in the age group 19 to 24, less than 5%, received formal vocational education. और this may be compared to other countries. अगर हम दूसरे कंट्रीज से इसकी तुलना करें तो you can see such as the USA where the number is 52%. USA में 52% vocational education है, Germany 75%, South Korea as high as 96%. These numbers only underline the urgency of the need to hasten the spread of vocational education in our country. तो ये हमारी नेशनल एजुकेशन में बहुत अच्छे से इस पे विस्तार डाला गया है। इसके साथ यू कैन सी past inefficiency focus on pathways. Some of the reason for the include the fact the vocational education has in the past focused largely on dropout grade 8 and upward or grade 11th and 12th class. However, student passing out from grade 11th to 12th with vocational subject did not have well-defined pathways to continue with their chosen vocation in higher education. इसके साथ ही vertical mobility in vocational education. The admission criteria for general higher education were also not designed to provide opening to students who had vocational education qualifications, leaving them at a disadvantage relative to their compared from mainstream education. This leads to complete lack of vertical mobility for students from the vocational education stream, an issue that has only been addressed recently through the announcement of the National Skill Qualifications Framework in 2030. साथियों, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो पास्ट डिफिकल्टी जो रही है वो सेक्शन 16.2 में देख सकते हैं। द लैक ऑफ प्लानिंग and the poor delivery of vocational education in the past has contributed to the creation of social status hierarchy in which vocational education is perceived to be inferior to mainstream education, meant largely for students who are unable to cope with the latter. This is a perception that persists even today and affects the choice students make. It is a serious concern that can only be dealt
with a complete reimagination of how vocational education is offered to students in the future. That is also very important. इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सेक्शन 16.3 talks about the vocational education integration into mainstream में बात करता है. This policy aims to overcome the social status hierarchy associated with vocational education through requiring all educational institutions, school, college, and universities integrate vocational education program into mainstream education in a phased manner, beginning with vocational exposure at early ages, quality vocational education through middle and secondary school, and smoothly into higher education. So it is very important aspect of the National Education Policy 2020. Integrating vocational education in this way will ensure that every child learns at least one vocation and is exposed to several more, emphasizing the dignity and importance of labor and exciting students about various vocations, including those involving local arts and artisanship. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. यू नो वेरी वेल कि हमारा जो टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 50% of school children by 2025 into vocational education. Section 16.4 by 2025 at least 50% of learners through school and higher education system shall have exposure to vocational education. This is in alignment with Sustainable Development Goal 4.4 and will help to realize the full potential of India's demographic dividend. The number of students in vocational education will be considered while arriving at the gross enrollment ratio target. इसी प्रकार से you can see vocational to be hand in hand with academy. The possibility of offering vocational course through open distance learning mode will also be explored in programs everywhere possible. The development of vocational capacities will go hand in hand with development of academic or other capacities. Vocational education will be integrated in the educational offering of all secondary schools in a phased manner over the next decade. ये सब का सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा फोकस किया गया है. Collaboration with polytechnics and industrial training institutes. Towards this, secondary school will collaborate with industrial training institutes, polytechnics, local institutes, etc. Higher education institutes will offer vocational education either on their own or in partnership with institutes. ये सब इसमें बड़ा फोकस इस पे किया गया है. Integration of vocational course in general education. साथियों, you know very well कि हमारे कंट्री में the Bachelor of Vocational Degree introduced in 2013 में will continue to exist, but vocational courses will also be available to students enrolled in other bachelor degree program, including the 4-year holistic bachelor's program. Higher education institutes will also be allowed to conduct short-term certificate courses in various skills, including soft skill, lok vidya,
knowledge developed in India will be made accessible to students through integration into vocational education courses. This is also very important aspect. Local skill base for vocational education. Section 16.5 of the NEP 2020 focused on vocational education will be integrated into all educational institutions in a phased manner over the next decade. Focus area will be chosen based on skill gap analysis and mapping of local opportunities, and technical and vocational education will become part of the larger vision of the holistic education. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आगे आप कह सकते हैं इस चीज को इस तरह से कह सकते हो, industry participation and budget. The Ministry of Education will constitute a national committee for the integration of vocational education NCIVE along with industry participation to oversee this effort, and should also earmark budget for promoting this integration. Create models and practice. Section 16.6. Individual institutions that are early adopters must innovate to find models and practice that work and then share these with other institutions through mechanism set up by the NCIVE so as to help extend the reach of vocational education. Vocational plus apprenticeship plus incubation centers, models of offering vocational education and apprenticeship will also be experimented with by higher education institution. Incubation center will be set up in higher education institutions in partnership with the institute. तो ये जो हम बातचीत कर रहे थे, जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मेन पॉइंट्स जो आज मैंने सोचा कि आज यह चर्चा के लायक है कि स्टेज के माध्यम से वो डिस्कशन किया जाए. साथियों, when we talk about the MGNCRE is a council that is promoting rural education, Gandhian philosophy, नई तालीम, कम्युनिटी इंगेजमेंट, स्वच्छता एक्शन प्लान, और गांधी जी के 3H के बारे में जब गांधी जी का बेसिक एजुकेशन पढ़ते हैं, यू नो वेरी वेल, we can't ignore 3H that is given by the गांधी जी. एजुकेशन का 3H का डेवलपमेंट करना इज मैंडेटरी. we can say the first H that is stand for head. पहला जो H है गांधी जी का, that is stand for head, कि हमें हेड को डेवलप करना है, दिमाग को विकसित करना है, बहुत ज्ञान वाला विद्वान हमें बनना है. The second H that is stand for hand, वो हाथ के लिए है कि हमें हाथ से कौशल युक्त बनना है, स्किलफुल बनना है, हमें काम आना चाहिए, हमें हमारे अंदर कोई ना कोई क्राफ्ट स्किल से रिलेटेड योग्यता हो. दैट इज इम्पोर्टेंट. द थर्ड H that talks about the heart, वो दिल की बात करता है कि हम जीवन में जो कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दैट शुड बी, वो आपका मन से होना चाहिए, डेडिकेशन और कमिटमेंट से होना चाहिए, और यदि वो नहीं होता है तो वो सारा बेकार हो जाता है. तो वी कैन सी there are three main objectives of the national education policy. The first objective is that to inculcate values in human behavior, and so that
they can become a good citizen. सभी प्रकार इनकलकेट करना, और द सेकंड कार जो रहेगा वो हम कह सकते हैं कि उसे उन सबको सेल्फ रिलायंस बनाना। बात किया, फर्स्ट हमने बात किया कि सभी प्रकार की वैल्यूज को इनकलकेट करना है। द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज दैट कि प्रत्येक व्यक्ति को सेल्फ रिलायंस बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, ताकि हम परिवार को, समाज को, राज्य को, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बना सके। द सेकंड ऑब्जेक्टिव दैट वाइस चांसलर जी ने इंडिकेट किया था, आपने ध्यान दिया होगा कि एक अच्छे नागरिक तैयार हो जिनकी राष्ट्रीय सोच हो। अल्टीमेटली 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसीज आर टू इनकलकेट वैल्यूज, एक अच्छा इंसान सभी मूल्ययुक्त बने, दूसरा वह आत्मनिर्भर हो, और तीसरा वह राष्ट्र की बात करे, राष्ट्र निर्माण का विचार उसमें हो। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत it is very important topic that is very crucial in the contemporary scenario. I congratulate all the faculty members, organizer of this program, जिन्होंने अपने बड़े डेडिकेशन कमिटमेंट इस प्रोग्राम को, इस कार्यशाला को, इस सम्मेलन को उन्होंने आयोजित किया। तो मैं सभी का on the behalf of MGNCRE, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India, कि आपने बहुत ही बड़ा ही कंटेम्प्रेरी रिलेवेंट सब्जेक्ट को लेकर के और एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। इन सभी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी डॉक्टर अनुराग जी, संदीप जी, मैडम जी, वाइस चांसलर जी, और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। Thank you, sir. Thank you so very much, sir. Sir, his emphasis on vocational education as important aspect in learning as experiential learning, and it is important for all the learners. And sir also pressurize that vocational education, technical education should be compulsory for all, and it is in 5 studies and phenomenals that success, innovation, adaptability, scientific temper, involvement should be involved in all, for all the learners with aesthetic beauty, art, fitness, sports, problem solving, and logical attitude, etc. These are the qualities that should be employed in all the students in this scenario. And the teacher is the most important factor to incorporate all these skills in the students. So there are very much necessity of the teachers to incorporate and to mention all these skills in their caliber to introduce in the students and the learners. Sir has also focused on UGC draft committee NEP 2020 and point 56 and 6.78, 4.25, etc. Sir has elaborated all these points, and valuable education की जो बात की हुई है उसमें the most important aspect explained by sir is mathematical learning and the things to be incorporated with technical education and vocational education in all the stages. That is very much important, explained by sir in all the levels. Sir, thank you very much. Thank you, and thanks a lot. Now, I would like to, so thank you. I would like to introduce the next speaker of today's national conference, Sir S.C. Pachari, Suresh Chand Pachari. Let me introduce you about Suresh Chand Pachari, sir, that he was born in 1974 and he did his master's degree in sociology and Hindi from Agra University and M.Ed from Regional Institute of Education, Ajmer, Rajasthan.
He was awarded PhD degree in education from Dr. B.R. Ambedkar University, Agra, and he is working as teacher educator for the last 16 years. Presently, he is serving as a professor in Sri Guru Ram Rai College of Education, Patri Bagh, Dehradun, and this is a constituent college of Shri Guru Ram Rai University, Patel Nagar, Dehradun, and he is the chief editor of an International Journal of Education and Allied Sciences with an ISBN ISSN number 09758380 and Education Vision, a journal of education with an ISSN number 2229 and 5755. So, has also credited his 7 books and 18 research papers and articles published in journals of national fame. He has presented more than 3 dozen papers in various national and international seminars, workshops, and conferences all over India. He is a life member of different professional associations related to teacher education like AIATE, CTEF, and IATE New Delhi, etc., and is presently served as Secretary of Council of Teacher Education Foundation, earlier known as Council for Teacher Education CTE, for the state of Uttarakhand and previously, and he had served as head department of Shri Guru Ram Rai PG College, Dehradun, and also program in charge of B.Ed IGNOU Study Center 3732 and Dehradun and Uttarakhand, and so is also associated with NGOs for social activities. So this is short brief about the all achievement of Dr. Suresh Chand Pachari sir. Sir is here with us. Uh, very good afternoon and Jai Hind, sir. Very good afternoon, ma'am. Sir. Very good afternoon to all of you. Yes. Thank you to all of you inviting me, and congratulations, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, for organizing this relevant and topical webinar and give me invitation for attend this session on new education policy. Today, I have no doubt that every aspect of NEP 2020 is being discussed throughout the higher education ecosystem. I will today focus on effective governing and leadership quality of higher education. So I will today discuss mainly the leadership and governance of higher education institutions. Basically, we have seen in 2 aspects regarding the governance of institution: external regulations and internal governance. NEP also addressing in both aspects, in briefly highlighted in the provision related to the external regulator body and self-governance. Then you have seen the external committees, just like a regulatory body, just university regulated by the UGC, and or institutions just like a governing just AICT is a technical and engineering education, NCT governing regulated as a teacher education, and medical education also governing by MCI, and law also governing by law council. Just like that, pharmacy also governed by pharmacy council. So all are governing by the governing body. But new education policy adopted a new plan, Higher Education Commission India. Its
is very highly competent by the regulated by the government of India. So just it is only left the medical council and law council, all regulated body by the this Higher Education Commission of India. So it means one umbrella is controlled all higher education by the government, and it is also see in our last policies. That's mean all policies and all regulations are there in before and after. But now in new scenario in education policy is governing by the higher authority. So it means एजुकेशन में अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हेलो हेलो Yes, sir, you are audible. Hello. आर यू हियरिंग मी? Yes, sir, आवाज आ रही है. जैसे हम देख रहे हैं कि हम HIC की बात अगर हम करते हैं, HIC की बात अगर हम HEC की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ मेडिकल काउंसिल और लॉ एजुकेशन को छोड़ दिया है अभी फिलहाल, और बाकी सबको कंट्रोल करने के लिए तैयार हो रही है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक तरीके से ई गवर्नेंस की बात करेगी और उसमें निश्चित रूप से जो कंट्रोलिंग होगी वो गवर्नमेंट की होगी और पहले से मजबूत होगी। पहले डिफरेंट टाइप की जो मैंने जितनी भी काउंसिल्स और ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने सभी को जोड़ा हुआ था और सभी एक तरीके से उसमें एक बैनर के तहत आ रही थी, मगर उन सारे बैनर्स को अगर हम देखें तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन कमीशन जो बना है वो सारे को कंट्रोल करेगा, उसमें लेके जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हायर एजुकेशन में और भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को आएंगे। पहले अगर हम बात करते हैं इसमें सिंपली तो हम देखते हैं कि जो हमारा एजुकेशन है वो देखता है कि भाई जो कमीशन है वो सिंपली किस चीज़ के लिए लीगली और जो एक्रेडिटेशन की बात करेंगे उसमें आएंगे और उसमें देखेंगे कि जो सिस्टम है वो हमारा पहले से कैसे बेटर चले। इसी में वो एक अम्ब्रेला के रूप में 2 पार्ट्स में दिखेगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके के उसमें पार्ट में दिखेगा। तो जो इंडिपेंडेंट वर्टिकली जो पार्ट होगा वो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो है NHERC जो रेगुलेशन है वो काम करेगी और उसमें जो काउंसिल है वो बनेगी जनरल एजुकेशन काउंसिल बनेगी जो स्टैंडर्ड्स को सेट करेगी और हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन जो है वो इसको फंडिंग की बात करेगा और नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है वो उसको एक्रीडेट की बात करेगा। तो इस तरीके से जो इसमें वर्टिकल चेंज आएगा हमारे हायर एजुकेशन में वो देखने को मिलेगा। और इसी में जो हमारी जो एक्सटर्नल रेगुलेटरी बॉडीज थी वो सारी बॉडीज जो है वो एक काउंसिल जो हमारा कमीशन बन रहा है उस तरीके से उस पर फोकस करेंगे और उसमें वो देखेंगे। अगर इसमें जो वर्टिकली अगर हम और देखते हैं इसमें आगे चलते हैं तो HECI जो है वो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी होगी जो काउंसिल के तहत पूरा सिस्टम को चेक करेगी और सिस्टम के तहत चलाएगी। इसमें प्राइमरी जो मैकेनिज्म होगा वो लेबोरेटरी प्रोसेस का होगा जो एक्रेडिटेशन के बिहाफ पर हमारे हायर एजुकेशन को डिवाइड करेगा। उसमें जो मल्टी एक्रेडिटेशंस उसमें आएंगे, जैसे अभी हम लोग देखते हैं नेक के थ्रू उसमें A+, B+, C+, इस
तरीके से जो एक्रेडिशन है उसी तरीके से एक्रेडिशन होगा। और उसमें काउंसिल जो है नेक का जो काउंसिल का वो है वो भी स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा। और उसमें जो काउंसिल है वो एक तरीके से नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल कहलाएगा। असेसमेंट की जगह पे केवल आप नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल ही कहलाएगा। इसमें अगर थर्ड वर्टिकल पार्ट जिसकी हम बात करते हैं वो अगर देखा जाए तो वो HECI है, उसके तहत जो काउंसिल है वो आगे फंडिंग को लेकर जाएगी, क्योंकि फाइनेंस जो है वो बहुत मैटर करता है हायर एजुकेशन में कि किस तरीके से हम स्मूथली अपने सिस्टम को चलाएं और किस तरीके से फंडिंग करें। तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान उसमें लिए जाएंगे, IDP बनेंगे और डिफरेंट क्राइटेरियाज को लेके चलेंगे। और जो क्वालिटी है और जो प्रोग्राम्स हैं उनके बिहाफ पर हम उन सारे पर रिसर्च करेंगे और उसके बिहाफ पर जो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है वो उसको ग्रांट कमीशन को जो है वो फंडिंग के लिए प्रपोजल देंगे और उसके बिहाफ पर फंडिंग दी जाएगी। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्कॉलरशिप में हो सकता है, ग्रांट फंड हो सकती है, और वो जो ग्रांट होगी वो डेवलपमेंट की। जैसे पहले भी UGC ग्रांट मिलती थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देते थे, और उसमें जो काउंसिल है वो अब उनके UGC और जो जितनी भी अदर हमारी जो काउंसिल्स थी वो एक ही अम्ब्रेला में आ गई हैं, इसलिए अब एक ही अम्ब्रेला के तहत सारी चीजें होती हैं। इसमें फोर्थ जो क्राइटेरिया है वो वर्टिकल, उसमें ये आता है कि जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है वो एक लर्निंग आउटकम्स को भी चेक करेगी कि जो लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं वो कितने ठीक हैं और उनका क्या वेटेज है, जिससे क्वालिटी भी चेक की जा सके। अभी जो इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और नया जो सिस्टम लाने की बात की गई है वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बात की गई है, जिनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ही एक तरीके की ऐसी बॉडी तय करेगी कि किस इंस्टीट्यूशन को किस तरीके के क्वालिटी के बिहाफ पर आगे बढ़ाया जाए। और उसमें एक और जो नई बात हम देखने को मिल रही है कि उसमें केवल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो 15 साल के लिए एफिलिएट किए जाएंगे। तो जो जिसमें हम एफिलिएशन यूनिवर्सिटीज होती हैं या एफिलेटिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी जो एफिलेट करती है इंस्टीट्यूशंस को, उनमें भी रिफॉर्म किया जाएगा, उनको भी चेंज किया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो है वो सारे इंस्टीट्यूशंस को एक तरीके से नए तरीके से इस्टेब्लिश करेगा, उन्हें एफिलिएट करेगा, उन्हें देगा, और अप्रोप्रिएट जो सिस्टम है उसके पर हाईली क्वालिटी को चेक करते हुए हाईली क्वालिफाइड जो सिस्टम है उनके बिहाफ पर उसको मोटिवेट करते हुए ये आगे चलाया जाएगा। इट मीन्स जो हायर एजुकेशन पॉलिसी है, अगर हम इसमें कहें एजुकेशन जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बेसिकली जो बात की गई है वो एक तरीके से ऐसे सिस्टम डेवलप की बात की गई है जिसमें हम पूरे हायर एजुकेशन को एक कंट्रोलिंग बॉडी के माध्यम से उसकी सारी चीज़ें, उसकी फंक्शनिंग को चेक करें, एक्रेडिटेशन को चेक करें, उसको फंडिंग दें, उसके एकेडमिक स्टैंडर्ड को चेक करें, एक सेटअप बनाएं जिस पे कोई भी कुछ भी तरीके का क्वेश्चन मार्क ना लगे, और जो रेगुलेटरी बॉडी है वो उसको टाइम टू टाइम चेक करें इन सारी चीज़ों के लिए। जैसे अभी ये क्योंकि पेपर है, अभी पेपर में है सारी चीज़ें, अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर डिस्कशन का एक ओपन पैनल रखा है, इसी तरीके से अभी इस पर चल रहा है और बहुत सारी जगह इसको कह रहे हैं कि हम अप्लाई भी कर रहे हैं। तो अभी धीमे धीमे ये चीज़ें आ रही हैं। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो तैयार हो गया है, पर इसको कितना और किस तरीके से हम अप्लाई कर पाएंगे, किस तरीके से इसे आगे लेके जा पाएंगे, उसको फिजिबल कितना होगा, कितना उस चीज़ पे हम ऑब्जर्व करते हुए इसे आगे कर पाएंगे, ये हमारी बात आएगी इफेक्टिव गवर्नेंस पे और लीडरशिप पे। तो इसी पे जो बात हो रही है उसमें हम यहाँ ये जोड़ना चाहेंगे कि इफेक्टिव गवर्नेंस तभी अपने आप में सक्षम होगी या वजूद में आएगी जब हम उसके लिए सपोर्ट सिस्टम भी लेके चलेंगे। इट मीन्स जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल है, उसके लिए हम दोनों को सिस्टम को इस तरीके से लेके चलें जिससे लोग लाइट माइंडेड उस चीज़ को अडॉप्ट करें, उसमें कोई हैवीनेस ना लगे और लोग उसे स्वीकृति दें। सबसे बड़ी बात आती है कि हम किसी
किसी भी पॉलिसी को कितनी एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी हमारी कितनी है, और उसकी फिजिबिलिटी को हम कितना अप्लाई कर रहे हैं और कितने उससे हम आउटपुट लेकर आ रहे हैं। तो कोई भी सिस्टम तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम पूरे क्राइटेरिया को लेके ना चलें। एक सिस्टम में हमने मान के चलिए पॉलिसी तो हमने बहुत अच्छी बना ली है, और पॉलिसी बनाने के बाद हम उसको स्वशासन की बात ना करें, उस पर प्रशासन की बात ना करें, उसमें ऑटोनॉमी ना दें उसको, तो वो सिस्टम कभी अच्छे से गवर्न कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए सिंपल सी बात आती है कि हम उसको अगर ई गवर्नेंस सॉरी इफेक्टिव गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ों को बड़े लाइट माइंडेड होते हुए उस पर इफेक्टिवली यानी कि टाइटली वर्क करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी हमें तय करनी पड़ेगी, और उसके जो ट्रांसपेरेंसी है वो से हमें लेकर आना पड़ेगा। जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो हमें प्रोवाइड करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिसी के तहत कही गई हैं, और पॉलिसी में ये बातें रखी गई हैं कि ई गवर्नेंस तभी मान्य होगा जब हम को लेके आए। अभी जो बात होती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्राइवेट सिस्टम में और गवर्नमेंट सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर है। तो बात वहीं आती है कि जो रिसोर्सेज हैं और जहाँ यूटिलाइजेशन की बात आती है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है या गवर्नेंस की बात नहीं हो रही या वहाँ पे इस तरीके का नहीं है। प्राइवेट में ऐसा हो रहा है, परंतु इनके बीच में जो गैप है, चाहे प्राइवेट सिस्टम है चाहे गवर्नमेंट सिस्टम है, उस गैप को फुलफिल करना होगा। उसके लिए इफेक्टिव गवर्नेंस की बात आएगी, और इफेक्टिव गवर्नेंस के साथ हम उसमें ये देखेंगे कि जो हमारे अकाउंटेबल पर्सन्स हैं, चाहे वो मैकेनिज्म कोई भी है, उसको वो तय करे कि भाई कहाँ पे लेगेसी हो रही है, कहाँ पे इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं मैनेज किया जा रहा है या प्रॉपर तरीके से नहीं देखा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि 2035 तक ये सारी चीज़ें अचीव हो जानी चाहिए। यानी जो इफेक्टिव गवर्नेंस की बात है वो हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सपना है वो हम उसको पूरा करेंगे, और वो एक जो हम कहते हैं कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, हम बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, बहुत हमारा जो सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पूरी तैयारी हमारी गवर्नमेंट ने कर ली है, और हम जो है अपने सिस्टम में उन सारी चीज़ों को रख सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है। तो पूरा सिस्टम जो है एक तरीके से ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है। अगर हम इसमें देखें तो एक तरीके से जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट तय कर रही है, और अकाउंटेबिलिटी भी तय कर रही है। जैसे जैसे लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस वैसे वैसे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है उनको, और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है। चाहे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बात हो, चाहे स्टेक होल्डर की बात हो, चाहे हायर एजुकेशन कमीशन की बात हो, जिसमें रेगुलेटरी बॉडीज जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज जो बन रही हैं वो इस चीज़ को तय कर रही हैं कि हम किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के बिहाफ पर एक्सीलेंस एजुकेशन एक्सीलेंस की बात करें, कैसे हम ये तय करें कि हमारी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो गई है, स्टैंडर्ड हमारा बहुत अच्छा हो गया है। दूसरा, हम जिससे भी आगे लेके चलें, जो भी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है वो इस तरीके से उसको लेके चले जिससे कि हमारा जो एजुकेशन है वो एक्सीलेंस की तरफ जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटीज़ के लिए बॉडी तैयार हो रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप इसका आउटपुट दें। आउटपुट का मतलब है बैक टू बैक हम उस चीज़ को अगर चेक करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो चीज़ें हैं वो आउटपुट की तरफ है। अगर हमने उसको नहीं देखा, हमने कहा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे हम देखेंगे कि हमने क्या आउटपुट आ रहा है हमारा या क्या हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारी गवर्नेंस है वो फेलियर है। हमने ये चेक ही नहीं किया कि हमने क्या आउटपुट दिया या हमारी कितना प्रोडक्ट किस तरीके का निकला। तो इन सारी चीज़ों के लिए पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की बात अगर आप सुन रहे हैं तो जो भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, वो पीपीपी मोड पे भी जाने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देके तय किया जा सके, भाई तुम्हारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी और तुम्हारी ये अकाउंटेबिलिटी है, आप इसको पूरा करके दें। तो इसमें जो गवर्नेंस है वो एक रिदम में काम कर पाएगी और अपने आउटपुट को अच्छे तरीके से निकाल पाएगी। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो हमारी लीडरशिप है वो इसमें
बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर हमने खाली लीडर ही बनाना है और लीडर ही तैयार करना है तो एक अलग बात है। पर यहाँ इंस्टीट्यूशन जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन के बिहाफ पे ये लाया गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो हमारे एक तरीके से हमारे कल्चर को, हमारे सिस्टम को, हमारे एजुकेशन को वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज एजुकेशन, और वो बताते हैं कि जो सिस्टम है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि जो रेगुलेटरी बॉडी हैं उनके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, उनको नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड सेट करने की बात की जा रही है, उनके जो हमारा कल्चर है उसकी बात की जा रही है कि हमारा जो जैसे भी मेरे से पहले जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइप में हमारे एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप का मतलब है प्राइमरी टू हायर जितने भी स्टेजेज हैं उनमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा ही रिफॉर्म किया जा रहा है। उसके कैरिकुलम, कंटेंट, सिस्टम पूरा ही एक तरीके से उसकी पूरी ओवरहॉलिंग हो रही है, मतलब एक तरीके से पूरा रिफॉर्म हो रहा है और पुनः ऐसा किया जा रहा है जिससे कि हम उसको नया रूप दें, नए रूप में लेके आए। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एम्फेसाइज तो कर रही है क्वालिटी पे और वर्क भी क्वालिटी की बात कर रही है, चाहे उसमें किसी भी तरीके से सिस्टम को तैयार किया जाए, किसी भी तरीके से जो भी इनोवेशंस हो वो किए जाए। जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका एजुकेशन पॉलिसी का वो है कि एक्सीलेंस ऑफ द वर्क, क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड इनोवेशंस ऑफ द वर्क, यानी कि जो भी हम करें वो एक अलग सा दिखाई दे उसमें, चाहे हमें एक सिस्टम को पूरा ही चेंज करना उसमें कहीं कोई ऐसी कमी ना रहे अब, जिससे कि ये हो कि जी हमने इतने साल बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई और उसमें ये कमी है। एग्जाम्पल बात करता हूँ कि अब ग्रेजुएशन में बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट वाली कोई बात नहीं, कितने समय के लिए भी पढ़ सकता है, उसको उसके ड्यूरेशन के हिसाब से उसको डिग्री, सर्टिफिकेट या कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करती है। इट मीन्स जो भी बच्चा है वो अपनी स्वतंत्रता से, यानी कि 100% जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो काम कर रही है इसके ऊपर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, यानी कि जो स्टूडेंट है उसको लेके बात करती है। तो निश्चित रूप से जब किसी बच्चे को मन की बात मिलेगी तो निश्चित रूप से वो अच्छा ही आउटपुट देगा, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट है। तो जब इंटरेस्ट उसका होगा तो निश्चित रूप से वो अच्छा करेगा, और अच्छा करेगा तो निश्चित रूप से वो लीड करेगा, आगे लेके जाएगा। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारी हाईएस्ट क्वालिटी को अचीव करेंगे, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस का जो कल्चर है वो एक्सीलेंस की तरफ जाएगा। निश्चित रूप से जो हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ रिसर्चेज नहीं हो रही, अच्छा क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ कहने के लिए बात है, परंतु अगर इसमें देखा जाए तो कुछ तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा, परंतु उसको देखने का नजरिया अलग है कि भाई हम उसको क्वालिटी से नहीं मेजर कर रहे। क्वालिटी के लिए हमें काम करना है, काम का डायरेक्शन हमें चेंज करना पड़ा, हम क्वालिटी किस चीज़ के लिए लेकर आना चाह रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आप जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे हम कुछ नया करना चाहते हैं, इनोवेशन लाना चाहते हैं, उस पर प्लानिंग करें, उस पर काम करें, उस पर नया कंस्ट्रक्शन, नई नॉलेज डेवलप करें। तो निश्चित रूप से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं हमारे हायर एजुकेशन में भी वो परिवर्तन लाएगी, वो निश्चित रूप से चेंजेस लाएगी, जिसमें जो एक्सपर्ट्स कमेटीज होंगी वो अपने माध्यम से उनको एवेल्युएट करेंगी और बताएंगी कि आपने ये चेंजेस किए और ये चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बात, जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, प्रशासन की बात है, प्रशासन की बात है, उसके लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हायर एजुकेशन में जो सेल्फ डिसिप्लिन की जहाँ डेफिनेशन आती है वो ये होती है कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो ये तय करें कि हमने जो काम किया है या जो हम करने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे सोसाइटी के लिए यूजफुल होगा,
हमारी सोसाइटी को बेनिफिट देगा, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बेनिफिट देगा, उसको इसमें तय करना होगा। तभी यहाँ पर बात की गई है इंटरेस्ट की, जो इंटरेस्ट है वो। और इंस्टीट्यूशंस के लिए लीडरशिप की अगर बात करें या फैकल्टी की लीडरशिप की बात करें या स्टूडेंट की लीडरशिप की बात करें, तो इंस्टीट्यूशन को भी एक लीडरशिप में लेके आना चाहिए। लीडरशिप का यहाँ मतलब है तो वो एक एग्जाम्पल सेट करे अपने इंस्टीट्यूशन का कि भाई मेरे इंस्टीट्यूशन में ये मेरा ग्रेड है, ये मेरा यहाँ पे काम हो रहा है और मैं इतना आउटपुट निकाल के दे रहा हूँ जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, सोसाइटी में इसका बेनिफिट दिया जा रहा है। और वो सेल्फ डिस्क्लोजर जो हो वो पूरा पब्लिकली आना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत सारा काम कर रही हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा उनका रिसर्च वर्क हो रहा है, तो पब्लिकली पता होना चाहिए कि इस फील्ड में ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है। केवल यही ना होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी इस लेवल पे है और इसमें ये ग्रेडिंग है उसके वर्क को भी डिस्प्ले होना चाहिए। डिफरेंट न्यूज़पेपर, वेबसाइट एंड अदर जो रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से वो लोगों को, पब्लिक को पता होना चाहिए हायर एजुकेशन में कि इस फील्ड में इतना काम यूनिवर्सिटीज कर रही हैं। तो उससे क्या होगा कि जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको फॉलो करेंगे। तो इट मीन्स जो इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो लीडरशिप का भी काम कर रहे हैं एक तरीके से। लीडर का मतलब ये नहीं कि केवल एक ह्यूमन बीइंग ही लीड करेगा या लीडर बनेगा। यहाँ पर लीडरशिप कोई भी कर सकता है, इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, फैकल्टी कर रही है, स्टूडेंट भी कर सकता है, स्टाफ भी कर रहा है। तो यहाँ पे बात आती है कि हम कितने एग्जाम्पल देते हुए या कितने अपने आप को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक लीड करते हैं, लोगों को अपने पीछे फॉलो करने के लिए तैयार करते हैं। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस चीज़ के लिए कहती है, इसमें अगर देखें तो निश्चित रूप से वो आपको भी मिलेगा कि उसमें जो उसका कंक्लूजन है वो कहता है कि हमारी जो एजुकेशन है वो इस तरीके की हो जिससे लोग हमारे को फॉलो करें, हमारे को माने हम लीडर हैं। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा और विश्वगुरु था, तो वो उसके लिए तभी है जब हम अपने हायर एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना एक्सीलेंस की तरफ ले जाएंगे कि लोग उसे फॉलो करने के लिए आए हैं कि नहीं वो एजुकेशन वहाँ जो मिल रही है वैसी एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, हमें वहीं जाना है, वही एजुकेशन लेनी है। तो उसके लिए हमें अपने को नए तरीके से नए स्वरूप में लेके आना होगा। और उसके लिए जो हमारी पॉलिसीज हैं, मैं यहाँ पता नहीं आप लोग मेरी बात से कितना सहमत होंगे, तो मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पॉलिसीज तो पहले ही बहुत अच्छी थी, डॉक्यूमेंटेशन पहले ही बहुत अच्छे थे, परंतु हमने उन्हें अडॉप्ट कितना किया, कितना हमने उन्हें फॉलो किया, ये एक आत्ममूल्यांकन या सेल्फ एवल्यूशन की जरूरत है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर ये फॉलो नहीं हुए और इसमें ये नई चीज़ें नहीं हुई, चाहे वो इनोवेशन है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे नई इन्वेंशन की बात है, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जितना उस समय पे उस चीज़ को अडॉप्ट किया तो उसके बिहाफ पर हमने उस चीज़ को ले लिया। परंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में ये नए तरीके से बहुत सारी चीज़ें आई हैं, उस समय वो जो हमारे इनोवेशन थे, आइडियाज थे, उसके बिहाफ पर हम उसको डेवलप कर पाए। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं किया, हमने अडॉप्ट किया, परंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में इन सारी चीज़ों को और खुल के बोला गया है और अच्छे से कहा गया है कि नहीं हमें ये इनोवेशन करने चाहिए, ये रिसर्चेज करनी चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए, नया इनोवेशन आइडियाज़ को प्रमोट करना चाहिए, नए नए जो वर्क हैं जिससे बच्चा आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा है, या हम कह रहे हैं कि भाई हम इसको इस तरीके की एजुकेशन देंगे तो उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बहुत सारे उसको जॉब्स के लिए मिलेगा, एरिया बढ़ेगा उसको अपॉर्चुनिटीज का। तो उस तरीके के लिए हम करें। तो यहाँ बात आती है कि हम अपने सिस्टम को कितना चेंज कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम अपने को लेके आ सकते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे या हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी भी जैसे बात होती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने इतना कुछ डाल दिया है, कैसे अचीव होगा। जैसे मान के चलिए 3 साल का कोर्स है, उसे 6 महीने करके चला गया और फिर बाद में वो जब आएगा करने के लिए तो हम उसे कहाँ भी जोड़ेंगे। तो इसमें सोचने की या करने की जो बात है उसमें उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके बिहार पर मुझसे आगे जोड़ते हुए उसका रिकॉर्ड तो उसके पास हो गई, उसको कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी उसके स्कूल में उसको जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारी जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा
वोकेशनल एजुकेशन काम करती थी पहले। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो जो हमारे सिस्टम था अभी भी 3 पैटर्न पे चलता है। अब एक तो फेस टू फेस चलता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई 4 दीवारी के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है, वो हमारी एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें फॉर्मलिटीज है, फॉर्मलिटीज को बच्चा पूरा करेगा, वो 4 दीवारी के अंदर है, वहीं पे उसको एजुकेशन मिलेगी। नॉन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये सारी चीज़ें अगर हम लेके चल रहे हैं और उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ना हम ये कह सकते हैं कि नहीं हम केवल हमारा जो एजुकेशन का एरिया वो लिमिटेड है। वो तो बच्चा क्लास फर्स्ट टू हायर जहाँ तक भी चाह रहा है, रिसर्च लेवल तक चाह रहा है, उसको इतना फ्रीडम है, इतना फ्रीडम उसके साथ एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है, तो वो किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकता है। पहले जैसे कहते थे कि आईटी जो है या कोडिंग डिकोडिंग है, जो बच्चा जो बीटेक या एमटेक करेगा वो सीखेगा या उसी को जरूरत है, परंतु अब ऐसा नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चों को क्लास 3 से ही कह रहे हैं, बोर्ड से कह रहे हैं कि भाई आप इनको कोडिंग सिखाइए, डिकोडिंग सिखाइए, और जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको आईटी के सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक तरीके से हमारे यहाँ एजुकेशन को रिफॉर्म करने की बात आ रही है। तो यहाँ बात है कि हम किसी भी एजुकेशन सिस्टम में अगर हम बिना प्रेशर बनाए अगर बच्चे को बहुत कुछ सिखाते हैं या बताते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चा जो है अपने आप को बहुत अच्छा करके देता है। जैसे अगर हम पेंडेमिक के टाइम में बात करें, तो पेंडेमिक में किसी को विश्वास नहीं था कि हम 2 साल जो हमारी गुजरी है 20 एंड 21, ये बड़ी कष्ट में गुजरी हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र किया है वो एजुकेशन सिस्टम। बच्चों को हमने आगे भी लेके जाना है और फिजिबल भी नहीं होना, फिजिकली वो प्रेजेंट भी नहीं होना। तो उसने जो बच्चे ने सीखा है वो कितने चैलेंजिंग के साथ सीखा है, और जो टीचर ने सिखाया वो कितने चैलेंजिंग के साथ सिखाया है। टीचर और स्टूडेंट उस चीज़ को बड़े आराम से महसूस कर सकता है। टीचर और स्टूडेंट उस सिस्टम को समझ सकता है कि उसने किस तरीके से अपने आप को इस लेवल पे लेके आया कि भाई वो फेस टू फेस मोड में ना होके भी, नॉर्मल कंडीशंस में ना होके भी अपने को उस लेवल पे अचीव किया, उसने उसको पास किया। एग्जाम तो सभी के हुए, प्रमोशन तो ऐसे नहीं हो गया ना, उसके एग्जाम हुए, चाहे इंटरनल के माध्यम से हुआ चाहे ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से हुआ। तो जब हमने उसको विपरीत परिस्थितियों में बच्चे को ये मौका दिया और बच्चे ने सीखा, तो निश्चित रूप से हमारे एजुकेशन में वो थी। तो वही बात हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी की है कि बच्चे को डराना नहीं है, हैबिट नहीं करना है, बच्चे को फ्री छोड़ना है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है, उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करनी है। जो बच्चा सीखना चाहता है, जिस तरीके से सीखना चाहता है, उसको उस तरीके से सिखाने की बात करनी है। और ये निश्चित है कि जो हमारी हायर एजुकेशन पॉलिसीज है, इसमें जो हायर एजुकेशन के लिए जो बात की गई है, वो 100% बच्चे के डेवलपमेंट की बात की गई है, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड है, चाहे मेडिकल का है, चाहे वो सिंपल ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स का है, वो किसी भी फील्ड का है, उसको पूरी तरीके से एक डेवलपमेंट की बात की, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं, उसको जिसमें भी जाए बच्चा फुल मास्टरी के साथ जाए। जैसे मैंने अभी कहा था कि बच्चा साइंस के साथ म्यूजिक पढ़ सकता है, इसकी बात की है। इसका मतलब बच्चे का अगर इंटरेस्ट इंग्लिश पढ़ने में नहीं है तो नहीं पढ़ेगा, उसका सब्जेक्ट इंटरेस्ट जो है आर्ट है या म्यूजिक है तो उसमें जाएगा, और उसमें जाएगा तो निश्चित रूप से वो अपने को स्पेसिफिक फील्ड में आगे ग्रो करेगा। तो निश्चित रूप से वो एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में आगे उसको दिखाई देगी, चाहे वो इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहा है, चाहे मेडिकल के फील्ड में काम कर रहा है, मगर वो अपना कुछ स्टेब्लिश कर पाएगा, सेल्फ रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो उसको रिफ्लेक्ट कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो निश्चित रूप से जो हमारी हायर एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के यहाँ पे, वो निश्चित रूप से बड़े रिलेवेंट होंगे और बड़े अच्छे होंगे। वही सेम चीज़ हमारी रिसर्चेज में भी काउंट होती हैं कि जो हमारी रिसर्चेज जब होंगी वो निश्चित रूप से हमारे जो रिलेटेड होंगी, रिलेटेड का मतलब है कि हम बात करते हैं, हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चलनी है रिसर्च में। पहले क्या था कि केवल एक पर्टिकुलर फील्ड में ही हम रिसर्च करेंगे, परंतु अब जो बात हो रही है वो हो रही है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कीजिए। आप एक फील्ड को दूसरे फील्ड से रिलेट करिए, जैसे मेडिकल साइंस को म्यूजिक से रिलेट करिए, हो सकता है म्यूजिक से भी बहुत सारी बीमारियां सही हो सकती हैं और होती हैं। ये
सिस्टम जो है वो हमारी बहुत सारी बीमारियों को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। तो क्या है, एक तरीके से जो हमारा विजन है वो बनेगा। तो जो हमारी लीडरशिप की बात यहाँ आती है, लीडरशिप का यहाँ पे मतलब है कि हम उस चीज़ को कितना लीड करने के लिए छोड़ते हैं, कितना उसको स्किलफुल बनाते हैं, कितना एंटरप्रेन्योरशिप उसको देते हैं, कितनी हम उसके इनोवेशन आइडियाज को डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जब एक साथ एक रिदम में काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन है, वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएगी, अपने सिस्टम को डेवलप कर पाएगी। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 निश्चित रूप से जो रिस्ट्रक्चर कर रही है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम का, उसको हमें देखना होगा। इसमें इंस्टीट्यूशन और जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर लेवल जो चेंज किए हैं उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके हिसाब से हमें डेवलप करना पड़ेगा। हमें जो टीचिंग और लर्निंग की बात है उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि हम इसको किस तरीके से डील करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी इसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उसके हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा पेडागोजी सिस्टम है पहले जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, और उसमें भी चेंज लाना है। तो लाना पड़ेगा क्योंकि पेडागोजी भी अब चेंज होगी। पेडागोजी में भी हमें बहुत सारे मेथोलॉजी जो है वो चेंजेस करनी पड़ेंगी। बच्चों को इंकरेज करना पड़ेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए उसको लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है जितनी भी हम गाइडिंग्स लेके चलते थे कि नहीं ये नहीं ये करेंगे ये नहीं करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें अपने चेंज करनी पड़ेंगी। तो हमारे स्किल्स के बिहाफ पे फंडामेंटल जो स्किल्स हम बात कर रहे हैं कि जी हमें ये डेवलप करने होंगे, बच्चों को टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाना होगा, क्योंकि अब हर फील्ड में अपनी जो आईसीटी है उसने अपनी जगह बना ली है, और उसके बिना आज की डेट में जो कोई भी एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो प्राइमरी का है, हायर है या सेकेंडरी है, वो अपने आप को हैंडीकैप समझता है। वो ये मान के चलता है कि जो बिना टेक्नोलॉजी के हमने आगे सर्वाइव कैसे करें। तो उसके लिए हमें बच्चों को, अपने टीचर्स को, टीचर एजुकेशन में तो बेसिकली टीचर को ही हमें तैयार करना है, तो टीचर को उस लेवल पे लेके जाना है कि भाई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो आपको कैसे उसे सॉर्ट आउट करना है और किस तरीके से उसे आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे इसमें, और निश्चित रूप से जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस पे मेन फोकस करती है डिजिटल मीडिया एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स द न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका फोकस है डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पे, डिजिटल मीडिया पे, और उसी पे वो आगे कदम बढ़ा रही है। बच्चे को बैगलेस स्कूल की बात कर रही है, बैगलेस सिस्टम की बात कर रही है। वो इस तरीके से माइंडसेट रिफॉर्म कर रही है बच्चे का, जो उसकी नोटबुक के बिहाइंड, मतलब उस नोटबुक पे डिपेंड ना होके अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें रखे। जैसे पहले था, पहले भी कहाँ हम लोग अगर प्राचीन काल की बात करें तो हमारे एजुकेशन में लिखा पढ़ी चलती नहीं थी, मौखिक जो गुरु ने बोल दिया बच्चे को याद करना है। परंतु अब वो सारी चीज़ें एक नोट पैड में आ गई हैं, एक डिजिटल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी कम्युनिटी को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूर्ण रूप से डिजिटलाइज करने की बात कर रही है, और उसमें जो गवर्नेंस और लीडरशिप की बात है वो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि निश्चित रूप से हम आज जो है डिफरेंट कंट्रीज उनके एजुकेशन से ऊपर उठने की बात करें, हम अपने एजुकेशन को इस तरीके से लेके जाएं कि लोग हमारे को फॉलो करें। तो यहाँ पे मैं एक बात इसी को और जोड़ना चाहूँगा कि जो इस समय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं या हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी जो काम कर रही है, चाहे वो मॉक के थ्रू है, चाहे स्वयं के थ्रू है, चाहे हमारे डिस्टेंस या एजुकेशनल आईटी के माध्यम से चल रही है, वो एक ऐसा सिस्टम जरूर डेवलप करें जिससे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो भी अपने उसमें सिनेरियो में बना रहे, और हमारा जो नया जो टूल्स एंड टेक्निक्स के बिहाफ पे जो हम नया सिस्टम अपने टेक्नोलॉजी वाला जो इसे पावरफुल करने की बात कर रहे हैं वो पूरे अस्तित्व में सभी को मिले। इसके लिए निश्चित रूप से हमारे हायर एजुकेशन को, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को बहुत चेंजेस लाने होंगे, बहुत सारे परिवर्तन करने के साथ साथ उसमें
स्टेप बाय स्टेप अपने स्टेक होल्डर्स को चेंजेस करने की बात करनी होगी, वर्कशॉप्स करने होंगे, सेमिनार्स करने होंगे। अभी चूँकि पैंडेमिक का लास्ट सिनेरियो चल रहा है, तो अभी निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि अभी फिजिकली अब सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने रह के इन सारी बातों पर चर्चा कर पाएंगे, पर यह है कि डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट के लिए हमें अगर ऑनलाइन मोड में भी वो चीज़ें मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ को अवेल करते हुए उसमें एक दूसरे तक हम अपनी बातों को रखें, तो निश्चित रूप से जो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है या डिजिटल एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, वो हमारा हो सकता है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं हम इसको नहीं कर पाएंगे या नहीं हो सकता। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी बातें कही गई हैं, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं यही कहूँगा कि भाई जो भी नए आइडियाज़ हम लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चाहे प्राइमरी में चाहे हायर में, उनकी हमें जो भी प्रोविजंस किए गए हैं उसमें एक्सीलेंस और मेरिट के लिए उन पर फोकस करना है। अगर हम उसमें ये सोचते रहेंगे कि ये कमी रह गई है या हम इसको कैसे करें या हम इसको अपना मॉडल कैसे बनाएं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मोटिव है वो कभी अचीव नहीं हो सकता। उसका क्या किसी का भी नहीं अचीव हो सकता, क्योंकि हमने अपनी जो एनर्जी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगा दी, तो निश्चित रूप से हम सिस्टम को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा बात यह है कि हमें अपने आप को राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है, और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है, उसमें से जो हमारे बेनिफिट की बात है, हमारे जो सिस्टम को डेवलप करके हमें और अच्छा राइज करा सकती है, उसकी बात करें, हमें उसके जो भी कमियां छोटी मोटी छूटी हैं, गलती आदमी तभी करेगा ना जब करेगा, जब करेगा ही नहीं तो गलती कहाँ रहेगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी और या छूट गई हों जो उसके लिए और ज़रूरी है, तो हम उनको जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इन्हीं कदमों के साथ मैं अपनी वाणी को सलाम देना चाहूँगा, और आप जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं उन सबको धन्यवाद। भारतीय यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब, मैनेजमेंट, चांसलर साहब, सभी को धन्यवाद कि उन्होंने इतने रिलेवेंट टॉपिक पे अपने यहाँ 2 दिन का ब्लेंडेड मोड में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए वाकई उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय करना बताया है। और इस तरीके के लिए मैं कह सकता हूँ ब्लेंडेड मोड में प्रोग्राम हो रहा है, इट मीन्स अब शुरुआत हो रही है हमारी फेस टू फेस मोड में जाने की। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम फेस टू फेस की मुलाकात करेंगे, और जो इस तरीके के प्रोग्राम है इसमें भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि ये उस समय लॉन्च हुई जिस समय हमारे यहाँ पैंडेमिक चल रहा था, और पैंडेमिक के दौरान इसमें मैक्सिमम जो काम हुआ वो ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन नहीं हो पाया। परंतु ऑफलाइन में इसकी ज़रूरत है कि हम उसको प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे कि हम कितना और किस लेवल तक इसको अचीव कर सकते हैं, और कहाँ छोटी मोटी कमियाँ छूट गई हैं और उनको दूर कर सकते हैं। और जब वो एजुकेशनिस्ट लोग एक राउंड टेबल पर बैठते हैं, तो निश्चित रूप से कितनी भी बड़ी समस्या हो उसका समाधान निकाल ही लेते हैं। तो जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सभी लोग कर लें तो फिर कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं बचता है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद। जय हिंद। हेलो हेलो। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, मेरी कंप्लीट हो गया है। यस सर, यस सर।
Yes, sir. Now may I request Dr. Anuj Raj sir to नहीं आ रही. Yes. Sir Hello. has joined us. Hello. 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 Can you hear me, ma'am? Yes, Hello. sir. I can you, but I think Suresh Chandachari sir has not listened to you. Yeah, ma'am. Okay. Okay. I can hear the voice of you and Pachori sir also. Yes, ma'am. Yes. Yes, sir. Thank Please. you. Yes. I really thanks and invited me as a just propose the vote of thanks on this special event of national we can say conference or this is the honor also because we are just organizing this event on a hybrid mode NEP 2020 transformation of Indian education system and our collaborator is Mahatma Gandhi National Council of Rural Education MGN CRE Ministry of Education Government of India. Really, it is a great that I have listened to all the experts. I first of all, I vote of thanks. I propose my vote of thanks to entire group of management, and I extend my hearty gratitude to all the speakers for sharing their graceful words with us today, first session. Really, it was a very mind blowing, and I think the students and our all participants who just join us from the different states online and also they are also present here and really it is a great privilege of faculty of education. First of all, in this sequence, because I am just proposing the vote of thanks, I would like to take this opportunity to place a hearty thanks to our first of all our honorable vice chancellor Professor G.K. Thapalialji, because under whose guidance and leadership we were just organized as such a meaningful event, and he always guiding us and suggest so many things because he also explained that how the new education policy 2020 is exploring the way of new possibilities and enhancing the quality of education in India, and especially in because in higher education sector, in school sector, and all the things. I thank you, sir, because once again, your support and remarkable suggestions in this national conference, which will help the implemented in the near future. Really, sir, I also would like to also express my profound gratitude to Dr. Salya Raz, the Chief Executive Officer of Swami Vivekananda University, because she always guiding us and continuous support. She always provided us to organize such a wonderful event here. And I also propose my vote of thanks to our Pro Vice Chancellor, Dr. Abhay Shankar Gaudaji, and also because he always supported us and thanks to how we just implemented this webinar in an online and offline mode. I also extend my gratitude to special our chief, we can say chief guest today, chief guest in first session, Professor Dr. Pradeep Kumar Mishra ji. He is Director Center for Policy Research in Higher Education, CPRHE, NEPA, New Delhi, and for accepting this our invitation and share his expertise on the present theme of the concert. He also discussed the various challenges and possibilities in the field of education, and also suggests that what and how we should incorporate right skills amongst our stakeholders, along with their professional ability, and how we develop the skills of in present scenario, especially in digital education system. Really, I thank you, sir, for this informative session, and thank you once again, sir. I really propose my vote of thanks to Professor M.A. Hassan, Head Department of Physiology Center of Excellence, Ministry of Youth and Affairs, Annamalai University, Tamil Nadu. And he joined us from the very far, and it is a beauty of this platform that he just expressed
so many things, and especially he focused on the importance of the sports sciences and biomechanics in real life, and how we include the sports sciences curriculum as suggested by the multidisciplinary approach in the NEP 2020 documents. Really, sir, it was a very wonderful session you have just presented here, and thank you, sir. And really, I also thanks to our another speaker because he was from the Ministry of our collaborator, Dr. Shatrughan. Because Dr. Shatrughan just is the regional coordinator of the Department of Higher Education. And Dr. Shatrughan focused how the education connected with the rural development, and without rural development, we cannot think about the national development. And how the NEP document suggested that about utilization of local language and skills for the national development. That is the main theme he just focused. And he also discussed the various programs which is in the we will incorporate it in the future. And really, thank you, Dr. Shatrughan, because very short call you have just suggestion, and you have just collaborated with us, and we are just organizing this national conference in the university. And really, I extend my really vote of thanks to Dr. S.C. Pachori, and he is professor from SGRR University, Dehradun, and he is also taking care of the CTEF, Council of Teacher Education Foundation of India, and he is also Assistant General Secretary of International General Secretary. And really, you have just focused that how implementation part of the this policy, how we implement, and what should be the role of the effective governance and leadership for the higher education institutions, and what will be the shape of these institutions. You have also focused this area. Thank you, Dr. S.C. Pachori, sir. And really, because my board of thanks will be not completed unless I will just thanks to Professor Sandeep Kumar, Dean Faculty of Education, because he regularly support, and under his guidance we are just this webinar in this university online platform. And really, it was a very thankful to all the department faculties who just involved to just organize this wonderful event for the 2 days offline and online mode. I just giving you some gist about it, because we have more than 200 participants just presented their papers in the offline, and we are running the technical session also in the evenings, in the evening part. And in evening, Dr. Joseph will just from the biomechanics LNIP Boiler, he will just join us as a speaker, keynote speaker. Dr. Kiran Lata Gangwal will join us as from the Lucknow University, and Dr. Sanjeev Kumar, Head Department of Physical Education, Central University of Punjab, will also join us in the evening session. So this is the beauty of this thing, because the most of our guest is just giving the online or offline. They are presented online or offline in the department. Really, I also thankful to, because last but not least, I propose my vote of thanks to all faculty members, especially Dr. Bhuvnesh Sharma, Dr. Mumtaz, Dr. Manju, because these are the organized secretary, Dr. Vibha Lakshmi, Dr. Rahul Shroy, and all the faculty members, Dr. Sanjeev and Dr. Ashok, Dr. Eva, and all the members, those who are just involved, actively participated in this, we can say, conference. And really, because without, and we can say, I could not propose my vote of thanks, because all participants from all over the India, I propose my special thanks to, and you have just sent the papers, and reviewer reviews these papers, and definitely we will publish this after the revision, and after your presentation, we will just publish these papers in the very in the ISBN number. And really, I also thanks to our IT special team, because without support we cannot say that we cannot reach in this stage. And especially Ayush, Mr. Ayush from the IT department, he's just looking care of this whole system here. Dr. Vishal, the head marketing team, he's also just explore these things. And really, I again thanks to all participants, all the speakers of this first session, and really I thanks to all of you. Thanks, Dr. Bhuvnesh, just
because you are just moderating all the sessions in the morning, from the morning, and you have just reached and after completing of this session, and rightly, because we are just accurate, we are just finishing this. We reach at the according to our timetable. Honorable Vice Chancellor also suggested so many things, and really you enjoy all the sessions. We hopefully we will again meet through the online or offline portal on this platform. I thank you again, once again, and I thank all the experts again. And over to now. Thank you, sir. Thank you, all of you. Jai Hind.